So, good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the podcast with Champions, episode 6. I'm your host, Navjot Singh. And as we have been doing in our previous episodes, we have been bringing people from different walks of life who have lived a life less ordinary and have inspired by how they have led their life. Today, we have a very, very special guest, Lieutenant Colonel Kamalpreet Kaur ma'am. We would like to tell you that she has a lot of accolades to her credit, a very, very decorated career, and a multitude of, she has a lot of things to her credit. So, but before we start, I would also like to congratulate everyone on behalf of our team for the Pran Pratishtha that's going to happen tomorrow of the Ram Lalla in Ayodhya. Uh, if I talk about Lieutenant Colonel Kamalpreet Kaur ma'am is a great champion of national integration, and she has been a champion of women empowerment as well. She's a veteran army officer, and she got commissioned into the EME Corps after passing out from the prestigious Officers Training Academy in 2000. She has received a GOC in C commendation card, the Golden Medallion. She happens to be, this is the most interesting, she happens to be the first female officer in the biggest armored battalion of the Indian Army. So take a bow, ma'am, take a bow for that. Besides that, after her illustrious military career, she has a lot of accolades to her credit in the corporate leadership role as well, where she was selected in a lot of roles and she chose to join the Amazon. She has also been mentoring the students for the SSB over the past 4 years or so, and she has inspirationally led these students into not just becoming army officers, but men and women of value. So friends, this is a brief introduction. If I go on, there's a lot of things about ma'am. It will take hours and hours on end to really recount her achievements. So welcome to the podcast, ma'am. Very good evening and welcome to the show. Thank you, Officer Navjot. It's really lovely to please continue. I am okay all years listening hours and hours together. So first of all, thank you so much for speaking such kind words for me. If you go back 22 years, I suppose I've been able to give or contribute only a zilch to whatever that many others do. And I suppose that's being a part and parcel of what we all armed forces officers are. And you are, of course, a brother officer who also has been into the belt forces. So you very well know how much one is into it. So thank you so much. And thank you so much for having me on the podcast. It's a pleasure. It's indeed a pleasure, ma'am. Uh, I have this ritual of starting my podcast with a little bit of poetry, so it wouldn't Mhm, be complete if I do the same here. So, mhm, a legendary poem by Harivansh Rai Bachchan. mhm. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का Exactly. विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि मेरे दोस्त कोशिश करने वालों की कभी हार Very नहीं होती। So, ladies and gentlemen, this a little tribute to the grit and determination and the illustrious career that ma'am has had. So, ma'am, let's go back to your younger years, to the formative years of your life. Um, let's talk about something about Zira village, where you hail originally from. Let's tell the audience, and even I'm not aware. Please throw some light on that. You do not know where Zira is all about, No, right? ma'am. I Oh beg my your God. pardon, but Okay, so Zira is the hotbed and the favorite quote unquote favorite of all the infantryans and all the artillery people, because it is the main line wherein we all go to Firozpur. Firozpur, you know, okay, right? Firozpur is on the border. Zira got is it. short of good about 40 odd. I would not remember the right kilometers, but yes, it is. I have beautiful memories of Zira. I mean, it's my dadka, I should say. It's my dadaji had a big house. We have all grown up there. And if I close my eyes and remember Zira, I remember Garmi, I remember Makkis, and I remember my cousins. I remember Mhm. how we all got together. I remember because
I have seen my dadka house getting converted from a mitti wala house to those of tiles, those of big pillars house and everything, and I loved that. And I am that person जो इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ है एंड उसने Absolutely. आसपास के लोगों को देखा है। सुबह उठकर माय दादू यूज्ड टू टेक मी टू टेक जो पास के जो गाँव के जो फील्ड्स हुआ करते थे, ही यूज्ड टू Mhm, से mhm. आई स्टिल रिमेंबर माय दे ऑल टीज़ मी कि मेरे घर का नाम लेकर के एंड दे यूज्ड टू से कि दादाजी उठो, पापा जी उठो, राइट? एंड मुझे कुकर दिखा के लाओ, राइट? Mhm. सो कुकर यूज्ड टू बी एवरीवेयर, राइट? एंड Yeah, वी yeah, यूज्ड टू yeah. गो विथ that girl, what I have become, and the liberty of being that person, I think made my childhood. कहीं एहसास नहीं हुआ कि मिट्टी में बड़े हो रहे हैं, कहीं एहसास नहीं हुआ कि Mhm, गाय भैंस सबके तबेले आसपास हैं, ओके, और कुक्कड़ आसपास हैं, एंड वी आर वर्किंग ऑन इन मिड्स ऑफ ऑल दोज गाय का जो ऑल गुडनेस एंड ऑल द गुडनेस ऑफ गाय इज देयर, वी गाय या भैंस है, वी इट नेवर केम टू आवर लाइफ इनटू आवर माइंड, वी जस्ट grew up together and the cousins mhm, flocked together, playing in mud, playing in water, playing in mhm. the nearby chapper. बिना बिना बनेर की छत हुआ करती थी, जिसको Right, हम right. छावनी के ऊपर चढ़ Exactly. के जाते थे। गिरना, पड़ना, कभी डर नहीं लगा कि ओह माय गॉड गिर जाएँगे तो क्या होगा? बगल वाले का घर हमसे घर से सटा हुआ होता था। एंड इफ यू Mhm, रिमेंबर गाँव के घर, द सीलिंग यूज्ड टू बी वेरी कच्चा, राइट? yes. तो इतना धूम मचाना कि कभी-कभी सीलिंग टूट जानी, राइट? जो डाँट खानी, वो अलग से कहानी, राइट? एंड घर में Mhm, शाम को हमें डाँट पड़ी, घर से बाहर निकल जाओ, हमें और मज़े आने। सो mhm, that is what Zira is for me. And on the border front, yes, it is a very on the main line. It is very important tactically, that I needless to say. Firozpur se pass Zira, then Moga, and then so on and so forth. Now Zira has grown. 1947, when my father was born, to just add 20-24 years plus, मतलब उसके बाद जब हम जिंदगी में आए तो तब और जीरा क्या हुआ होगा. So mhm. I've seen Zira grown from a small village to a big town now. अब Yeah. any special बचपन की कोई ऐसी खास याद जो आपको आज भी नॉस्टैल्जिक कर देती है? कुछ ऐसी बात जो मतलब आप बताना चाहेंगे? कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बात? तो अफसर नवजोत ऐसा है कि मैं हमेशा लोगों को बड़े प्यार से बोलती हूँ कि ये तो फौज है जिसने मुझे सुधार दिया, वरना हम भी किसी गुंडे किसी काम के थे, राइट? So राइट। I was known for the nature that I have कि अगर गलत करोगे तो पिट जाओगे. So well, so I was kind of, मुझे बहुत सारी याद है. यू आर गोइंग टू पूरा नेशनल टेलीविजन पे तुम मेरी पोल खोलोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी. तो एक आई विल श्योरली शेयर. तो आई थिंक मेरे कुछ कैंडिडेट्स को ये कहानी पता है. सो I was in class 11th, I suppose, or 12th. I do not remember much. So हमारी ट्यूशन क्लासेस हुआ करती थी, तो होली का दिन था. तो होली के दिन में मुझे ना टीचर ने बताया कि आज बच्चे क्लास नहीं है, और ना मुझे पूछा. अच्छे बच्चों की तरह चल पड़े साइकिल लेकर के. जब वहां पहुंचे तो बोला, बेटा कमल, आज होली है, आज आप घर जाओ. ग्रेट. जब हम वापस आ रहे थे तो किसी बेचारा बंदा जो है उसने थोड़ा बहुत छेड़खानी करने की कोशिश की. तो मैंने कहा क्या ही बेचारे को कुछ कहना, तो हमने रास्ता बदल दिया. तो उसने फिर रास्ता बदल दिया, वो भी आ गया. तो उसने उसने फिर मैंने उसको बोला पिट जाएगा बिना मतलब के. फिर हमने फिर रास्ता बदल दिया. जब वो दूसरी बार पीछे आया तो मैंने बोला गाड़ी रोकी अपनी, मतलब साइकिल थी हमारी. मैंने उसको बोला भाई देख ऐसा है, आज त्योहार का दिन मैं पीटना नहीं चाहती. तो उसको लगा क्या ही बोल रही है, ये मुझे पीटेगी. तो मैंने कहा देखो आप जानते नहीं हो मुझे, मैं आपको कह रही हूँ आप चले जाइए, राइट? कोई मतलब नहीं है, आप मुझे 4 बातें बोलोगे, मैं आपको 4 बातें बोलूँगी, आप फिर आपको मैं मारूँगी, पीटूँगी. नहीं माना वो तीसरी बार फिर आया. मैंने कहा गलती कर दी अब आपने सर, अब तो अब फिर पड़ेगा मुझे. आई सेड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू. प्लीज़ folks, I know it looks like a मनगढ़ंत सी कहानी. You can call my mother, you can call my cousin, you can call my parents. Why? Because उसका पीछा किया, उसकी साइकिल से उसको धक्का मारा और उसको अमिताभ बच्चन के स्टाइल में उसको 2 बातें धमकी आकर दी, खबरदार जो इस रास्ते से फिर दिखाई दिया तो. वो लवली। वो एंड व्हेन आई केम बैक होम मैंने बड़े जल्द से तो थोड़ा-सा मुझे लग लगा गई होगी क्योंकि मैंने भी कुछ किया ही होगा.
Mhm. My cousin was here, right? He says, क्या हुआ तुझे? मैंने कुछ नहीं, बंदा तंग कर रहा था, उसे पीट पाट के आई हूँ. Oh my God! They said, कमल तूने क्या किया? उसे कुछ हो तो नहीं गया? मैंने कुछ नहीं, धक्का मारा, नीचे गिरा, उसको सिर पे चोट लगी. That's all. And और परेशान. They just picked up. हमारे पास Fiat हुआ करती थी. Fiat उठाई. It was half a kilometer, not half, yeah, a kilometer away from what my house is. जाके उसको बंदे को देखा, हाथ जोड़ के रो रहा था, ले जाओ इसको यहाँ से, प्लीज इसको मेरे सामने, मुझे बचा लो. So these are the things of my bachpan and me growing up. So comparative to that in Forge, I have not done like this. I've been very kind. So yes, these are few things and the peeps into my childhood and my growing up. Mama, that's very interesting also because आजकल kids are more diverse from मिट्टी में खेलना and all that cheese. आजकल तो kids are into more into iPads and iPhones and their gadgets. Yeah, Even true. still since even infants it Yes, has been mocked. The infants they are so expert in handling these gadgets. So kind of yes. how do you see the transition from those years? I feel even since I am a 90s kid. So I feel our childhood was also very interesting. बड़ा मजेदार टाइम था. फोन नहीं थे, कुछ नहीं था. एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मजेदार टाइम होता था. और Hmm. आपका तो उससे पहले का है. तो अभी आपने तीनों फेजेस देखे हैं. तो आपको क्या लगता है क्या चेंज हो गया और बच्चों को किस तरह से थोड़ा सिंस यू हैव अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड एज वेल, सो आप किस तरह से देखते हैं बच्चों की साइकोलॉजी, एंजाइटी स्ट्रेस का शिकार होते हैं, तो किस तरह से इस चीज को आप देखते हैं? वैसे तो थैंक यू फॉर सटली टेलिंग कि मैं बहुत ओल्ड हो गई हूँ. बाय द वे, दैट्स वेरी नाइस, आई लाइक इट, गुड. बंदा बड़ा स्मार्ट स्मार्ट है, गुड गुड, आई लाइक इट. Nonetheless, I refuse to age. So whatsoever you might say, I'm not going to agree. Uh, एब्सोल्युटली. so you know what? It's a beautiful question because I just faced it a few days back only. My daughter was supposed to run the 600 meters in the school, and she did not really make it up because सारे बच्चे age groups के साथ भाग रहे थे because they had a color group, and उस color के group 6th standard, 7th standard, 8th standard के सारे बच्चे भाग रहे थे, and she could not really make up to the first three ones. So she came home आराम से, मम्मा मैं ना I had not been able to make it because वो 600 मीटर थी. ऐसा so बोलती 600 मीटर, बोलती मम्मा मैं थक गई. आई सेड सो, तो बोलते आपको पता भी है 600 मीटर क्या? मैंने कहा हाँ, हाफ अ किलोमीटर. सो इट्स हाउ मच? बोलते मैंने कहा हम तो नॉर्मल है ऐसे सुबह से लेके मतलब 5-10 मिनट में हम लोग इतना भाग भूग के वी नेवर यूज्ड टू फील एनीथिंग. बोलते आप अलग हो. तो ऐसे मैं अलग नहीं हूँ, तुम्हारा जमाना अलग है. And similarly, so there's a good and the bad part. Now, I will just say the good part is that these people are adaptable to anything which is comfortable, right? Game download करनी, अरे फटाफट से टक 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 करके कर लो, right? But anywhere and anything that demands physical resistance, patience, waiting, validation जल्दी से ना हो. And let me tell you, I forgot to mention, उसकी आंखों से टप 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 आंसू बहने लग गए. That 600 meter में मैंने कहा कि बेटा you need to do it. So it's a realization for me. I need to make her go for a run. It's a different story. And the transition that I've seen over a period of time is that हमारा patience बहुत कम हो गया है. We wanted everything right. Um, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन. इंस्टेंट चाहिए. मैं 600 मीटर 2 दिन तो मैंने प्रैक्टिस करी ना. 2 दिन मैंने प्रैक्टिस करी तो मेरा आज तो आना ही चाहिए. कैसे आएगा भाई? How? Right? When we used to play games, right? तुम्हें याद होगा, आपको याद होगा, 7 पत्थर रखते थे, मारते थे, right? पक्के से पक्का दोस्त अगर ऑपोजिट वाली टीम में होता तो उसको भी पिटाई पड़ती थी कि भाई मेरी टीम जीतनी चाहिए, तू चाहे जो मर्जी कर ले. एकदम. वो कैसे टीम जीत गई? दैट थिंग, चोटें लगी, एक ब्रूज हो गई. मेरी बेटी को आज एक ब्रूज लगती है, मम्मा माइक्रोस्कोप से मैं देखो तो मुझे ब्रूज नहीं दिखती. So that kind of general, not that I don't relate. Every child is like this nowadays, and Yeah. every child is very precious. And ऐसा नहीं कि हमारे माँ बाप को हम precious नहीं थे. It was like हमें ही चिंता नहीं होती थी कहाँ लग रही है भाई, किधर लग रही है. It's okay, पता ही नहीं लगता था कि सारा महीनों कि अच्छा ओहो तीसरे True. महीने में तीसरे दिन को तीसरे घंटे में ये लगी थी, क्योंकि ना True. इतनी सारी चोटें लगती थी. So we Mhm. were rugged enough. आज अगर जैसे आपने thank you for saying the poem that you mentioned. It so relates to the struggles that I've faced. Uh, that वो जो मैं गिरी पड़ी, right? That developed us one very important aspect in our personality.
in all our personalities. That is resilience. Absolutely देख लेंगे आज इसकी बारी कल मेरी. That true. thing, that thing has changed. That thing has changed. That thing यानी आज क्या है, अरे यार वो पहले चला गया, ओ माय गॉड मेरी बारी कब आएगी, मेरा क्या Hmm. होगा. We are Hmm. not ready for the second time, third time, fourth time, fifth time. We're not ready for the 100th time. We leave, we quit. So that has come. Right, Okay. right. But these kids will also learn. Aisa nahi, we all are there with them. They will also learn. Yeah, I think that a balance has to be made between, the social media world, the virtual world, and the physical world, actual world. They need Yes. to rough it up in the mud, they rough it up in the field. So that's also important to an extent. Ma'am, I was reading about your uh, grandfather, and he happens to be a decorated military veteran for the British Indian Army. So I would like you to tell some your connection with your grandfather and your great grandmother, who used to be called as the Rajmata, a little bit, because it intrigued me. So I would like to have a little story about that. So, yeah, so my great grandmother, मैंने उनको देखा नहीं है, but she had 7 sons, right? And she gave away all her 7 sons to the British India because तब तो joining the army हमारे खून में था, तो we joined there. And at I think after that, sometime only few of her sons were left. One of them was my Dadaji, and there are 2 to 3 more who left. We are different lineage altogether. Mostly everybody is settled down in the Punjab zones, Chandigarh and Panchkula and that zones. They have settled down. And मैं अपने दादाजी से पूछा करती थी. I mean, I came to know quite late. The irony is, I mean, now you've got me reminded of. I joined in 1999 2000, and after Mhm. that, I was posted to Chandi Mandir for Op Parakram, right? और Mhm. उसके बाद Mhm. हमने बीकानेर में जाना था. मेरी यूनिट चंडी मंदिर बेस थी, हम लेकिन हमने जाकर के बीकानेर से आगे पोखरण तक जाना था. Right. उसके पहले ही आई हैड कम ऑन छुट्टी, जो वो छुट्टी जिसमें जिसमें आई वाज रिकॉल्ड बिकॉज पार्लियामेंट में अटैक हो गया, राइट? सो 2001. yes, 2001 we were recalled back on Chutti. So my दादाजी को एक तब वो साल में मुझे मालूम पड़ा, oh my god, my दादाजी was a veteran. I did not know about it. My दादाजी told me then. तब तक मेरे दादाजी was a person. He was, when he passed away, he was 6'2". My god, 6'2", past strong person. And that man, usse, my father, who was a very strict person. They are three brothers and one sister. They were, सब लोग डरते थे उस एज में भी. And he was so sentimental when he came to know that. I mean, I generally did not tell my stuff till that I've done it. So once he came to know, oh my God, my मेरी जो पोती है, she has joined armed forces. I saw him crying. And उनकी एक ही इच्छा थी that I should be in the uniform. I mean, I don't know why, but I just could not go to him even when I was posted in Chandi Mandir because we had to move very fast. वो इच्छा मेरी उनको दिखाने की रहेगी. बट मैं घर का सबसे पहले बच्चा था. That man has taken me to all countryside on his shoulders. That man, I remember, he could read Urdu, Pushto, Arabic. What a Wow. learned man. Yes, what a learned man he was. That is the time when on phone he mentioned that उनकी माता जी को राजमाता का खिताब मिला था. एंड वो प्राइड के बाद उनको उतने सालों के बाद अब जो प्राइड महसूस हुई बिकॉज उनके घर का बच्चा लेकर आया. He says, Mhm. I mean, there is something very uncanny that I still at times feel that एक जो इच्छा मैं उनकी पूरी नहीं कर पाई. वो कहते हैं कि हमारा अब जो उसका जो उनका एक आधा रह गया जो सपना था which he wanted to fulfill because he had gone in 1945 to fight and he was hit by a bullet due to which he had to come back because he was medically boarded out. He Mhm. wanted, जो वो सपना देख रहे थे that is being fulfilled through me. रिश्ता तो मेरा बहुत गहरा है उनके साथ, कहानियां बहुत ज्यादा हैं, बट एज यू मेंशन शाम खत्म हो जाएगी लेकिन बात नहीं खत्म हो पाएगी. This I is know very मैंने actually, it's very interesting and stories of grit and determination, and obviously
those people who have lived life, line-hearted people of those Yes. years. So absolutely nostalgic about that as well. And ma'am, now coming back to my home state, Jammu and Kashmir, you seem to have a really strong Yeah. connection to Jammu. So Very, very please tell strong. us about it. Please tell us about it. Okay. The man whom I love so much, my husband, and he's from Jammu. He's from Araspura, all right. Oh, And my daughter is born in Jammu, right? okay, okay, okay. Yeah, and my Sara in-laws मेरा आरसपुरा का है, जम्मू का है, पुंछ का है, बारामूला. You name a place, Srinagar, it's there. Mhm. And that's the reason born in a little bit when I was born, my mother was there in Kota. Otherwise, my father was in Gujarat. Uh, Born, brought up in Gujarat. Fell in love in Maharashtra to a man from Jammu and Kashmir. Did my training in Chennai and got posted to many many other places of the entire world, entire countryside. So that is Jammu to me, and I have got only and only love from Jammu and Kashmir. सिर्फ प्यार मिला है मुझे, बहुत Right. सारा प्यार. मेरे कजिन्स मेरे पे अगर मैं आज बोल दूं ना कि मुझे कुछ चीज चाहिए या उनका साथ चाहिए, but of course that is what relation is all about. But उसके साथ साथ my by the way, I did not mention Captain Uncle is there, who's a Veer Chakra, right? And yeah, he's my God bless him, and he is my great Sasu, and he's there in Jammu and Kashmir. And सारे जम्मू कश्मीर वालों को मेरा सलाम दुआ. And Okay, जो okay. एशिया के opposite जो पेट्रोल पंप है वो मेरे Yeah, yeah. Asia yeah Hotel. For the audience, yes. Asia Hotel is a very popular hotel in Jammu. It's a landmark. So, I mean, मैम थोड़ी बहुत डोगरी भी आपने कुछ थोड़ी बहुत डोगरी भी सीखी थोड़ी बहुत आपने? तो आप चाहते हो कि मैं सबके सामने अपनी फिर से पोल खोलूँ कि मैं छोटा फटा हुआ तो मैं गुजराती बोल ही लेती हूँ, उसके बाद में मैं डोगरी भी बोलूँ, पुंछी बोलूँ, डोगरी बोलूँ, पंजाबी बोलूँ, नहीं भाई। आज के लिए Okay, इतना मेरा पोल खोलना काफ़ी है। सो या okay, okay. थोड़ी बहुत मुझे ये लैंग्वेज आती है, बट दैट इज़ ओनली फॉर द इयर्स ऑफ माय हस्बैंड एंड माय इन-लॉज़. Okay, okay, okay. Wonderful, 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 ma'am. या, या. Uh, ma'am, now coming to your journey in the olive greens. I mean, Yeah. as you mentioned, your grandfather, he wanted you to join the army. Your father also has inspired you to into that journey. So how challenging was it for that young girl from Zira and rising the ranks and making it to the prestigious OTA Chennai? So how was it your journey from that kid to to officer commissioning into the core of EME Corps? So walk us through that journey a little bit. सो अफ़सर साहिबान ऐसा है कि जब इंसान आई कीप टेलिंग पीपल अगर आप में पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन ऑयल क्यूज कैसे डेवलप करें, अब मेरे में फलानी क्वालिटी कैसे डेवलपमेंट करें, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें. सो आई टेल देम लॉट ऑफ स्टोरीज. So we happen, we, anybody, you, me, we happen over a period of time when these situations keep coming, right? जब Absolutely. थप्पड़ पड़ते हैं, और रोने का, I mean, you decide I'm going to cry and make everybody believe that I'm right. That is your personality. जब थप्पड़ पड़ते हैं, बोलते हैं यार आज ये की जगह पड़ी है, कल देखते हैं कहाँ पर पड़ती है. That's your own personality that is happening, right? जब कोई बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें तंग करूंगा, and how you handle that part of तंग करना, right? That is a different personality. And then जिंदगी में और भी बहुत सारे टाइप के स्ट्रगल्स आते हैं, राइट? एकेडमिक स्ट्रगल्स आते हैं, स्पोर्ट्स वाले स्ट्रगल्स आते हैं, इमोशनल स्ट्रगल्स आते हैं. They Right. are the ones that shape you. What is that you choose to pick up from the dant of your parents or the people around you? That matters a lot, right? When we were Mhm. growing up on this mud की जो छपरे and गाय और भैंसों के बीच में, तो हमने कभी ये रियलाइज नहीं, ना ही हमने कभी फील किया मेरी जिंदगी कैसी है, मैं तो इन मिट्टी में बड़ी हो रही हूँ, मेरा क्या होगा. We enjoyed that, right? And then Absolutely. जब That. सो जब मेरे फादर ने मुझे पॉकेट मनी नहीं दी और कहा बेटा चुप करके घर जा, ऑफिस स्कूल जा और चुप करके घर आ, दैट इज अ डिफरेंट पर्सनालिटी दैट ही वाज मेकिंग मी इनटू. और आई यूज्ड टू सी एवरीबॉडी हैविंग समोसा आउट ऑफ द आउट स्कूल के बाहर. बड़ोड़ा हाई स्कूल अलकापुरी इज माय स्कूल हियर इन बड़ोड़ा. तो माय फादर सेज तुझे उसको खाने में ऐसा तो क्या चस्का मिलता है, जस्ट टेल मी वन थिंग जो तेरे को घर में नहीं मिलता, तुझे समोसा चाहिए ना, मैं लाके दूंगा. बट व्हाट इज टू मच, Mhm.
The chaska was not of samosa. Chaska was of that 1 rupee that we used to wanted to get. Yeah, yeah, yeah. You earn it. You earn it. तुझे जो खाना. That thing we choose that you earn it. So what made me that person, right? So what made me that person was that uh, घर का माहौल, of course. Let me not deny that part. My Absolutely, dad. absolutely. So then these aspects जब मेरे turning points से 7th से 8th standard जब I went, I was getting third rank. I just got Yeah, third rank. I was about to ask this question, ma'am. What happened in Yeah. class 7? What is the story of your Yes. class 7? Yeah. So my father wanted, my God, मेरी बेटी पहले 10 में तो आती है, पहले पहले भी आ जाए और देन मैंने कहा भाई इतनी मेहनत कराते हो यार, खेलना भी बहुत जरूरी है एंड मेरे लिए खेलना बहुत जरूरी था बाय द वे, खेलो नहीं तो रात को नींद कैसे आएगी. सो आई सेड यार किसी तरह से तो इनका मतलब इच्छा पूरी की जाए. सो बहुत मेहनत करी, एक बार थर्ड रैंक लाके दिखा दी एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि बॉस आई हैव डन इट. एंड बॉस आई स्टिल रिमेम्बर वो एक फ्लेक्स जो फोल्डेबल चेयर आती थी उस जमाने में जिसमें ये लोग पता नहीं सब कुछ डालते थे प्लास्टिक का. एंड ही वाज सिटिंग इन Mm-hmm. देयर, अपनी बुक पढ़ रहे थे. एंड ही वाज से आई सेड मैंने आपको कहा मैं थर्ड आई राइट. आई सेड ही सेड सो. आई सेड सो मतलब मैंने अपनी वाट लगा दी, थर्ड रैंक लगा दिया. Out of 150 people in all the three sections, I've come third, right? And he says, "So what, Kamal? Right? So you want to bask in the glory of third rank?" I said, "You only asked me. It is now my upper secondary, and it's going to change my life, and so on and so forth." He then said, "बैजा कुड़िए." बोलते इतने सारे साल बोलने के बाद आज तूने मेहनत करी and you want to bask in the glory, you want to buy this, that, फलाना ढिमकाना. I said, "I'll do it for you." बट बेटा जी ऐसा है, करना क्या चाहती हूँ और क्यों करना चाहती हूँ तुझे क्लियर है. आपने बोला ऐसा मैंने कर दिया. बोला नहीं नहीं बेटा नहीं. आई थिंक यू आर illusioned. My father talking to me after 7th standard when I've just got into 8th standard, talking such big things and I do not know where to look and where not to go. Of course, I went and complained to my mother later, but I did some introspection there. That introspection, that thing when he said was, of course, my mother also says many things, but that thing that I remember, and doesn't just imagine after so many years we're still talking the same thing, right? He says, "देख ले Mm-hmm. बेटा, या तो अभी मेहनत कर ले Mm-hmm. और जिंदगी भर शान की जिंदगी जी, या अभी शान ले ले और जिंदगी भर मेहनत करते रहे. Decision is going to be yours." It hit Absolutely. home run. It hit me home run, and I said, "That is they." And I just remember sitting down in my room, छोटा सा एक रूम क्या था, घर सब लोग साथ में रहते थे, jotting it down in my diary कि what is that I want and why. My why got clear, Navjot, that day. Wonderful. That's actually very good. Yes, my That's, I why mean, got clear. Yes, and that day I decided, that's the training you need, actually. That's the training yes, you need. my why got so clear, so clear. So it may have candidly, my mother wanted me to be into getting into doctor. My why got so clear. I said, I am not becoming doctor. She said, Right. why? I said, I want to put a factory, which is a fact. Many people know that about it. I want to put a factory wherein I'm going to employ people, wherein I'm going to give wages to them, and they're going to get jobs out of me for that particular factory, which is the factory which is going to be give me maximum churn run, is the mechanical factory. So I'm going to get either in a mechanical or a chemical engineering only. And I'm not ready to study the entire life of mine. I'm not. Mm-hmm. I want to give my family life also, give time to my family also. So it is not going to be doctors. Hats off to all the doctors. So they do a great, amazing job. But my why Right. got clear. So I mean, there are many aspects that led after those things, which led me to become army officer. But I suppose you have many questions for me to No, relate to no. that. Also. Yeah, in fact, adding on to that, my mother always tells me ki Mhm. when I do something good and she wouldn't praise me in a way, so she tells, Mm. look at Vishwanathan Anand's mother. When he comes Yes. after winning, his mother Yeah. would tell him that this move was not correct. You would have win earlier. So that's Yes. what I think the role the parents and your well-wishers they play. They guide Exactly. you and tell you what is the right thing, and you don't Yes. sit on your laurels.
that is the thing. That's how we grow. Yes. That Yeah, tough taskmaster is required because exactly. yeah, that's I think the My, role that yeah, so my boss, Abhijit Borkar, in Amazon, I really respect him a lot. बोलते congratulations हो गया boss. It is day one. Amazon is day one. So is life day one. अगर तुम कल की ग्लोरी में आज जीना चाहते हो तो boss, how are you going to grow? Not that I'm telling you to be ambitious, but I'm asking you to develop yourself time and again and again and again and then again, right? absolutely. So none of the athlete, आप नीरज चोपड़ा को देख लीजिए, आप बाकी सारे सबको देख लीजिए, they keep evolving, transforming themselves. You look at the actors, you love them. Why? Because they are Because they keep evolving. going. They keep going. Amitabh Exactly. Bachchan, Amitabh Bachchan Yes. mostly mentions that जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है और Yes. जब हम सीखना बंद कर देंगे he's 80 he's still learning he's evolving and what are we so it's the lesson I think that's what we have to the Yes. youngsters they have to learn this trait that don't say that you are a college topper or a school topper that you will do good life welcome to life is Yes. different And, life is and, different and may I take your platform to tell one more thing to the youngsters? absolutely First, absolutely first topper होने से कुछ नहीं होता. If you're the last backbencher, you're a failure, you're a topper, you are a mediocre, you are a gold medalist, you are silver, you are a failure of the 10 times. Nothing. It is only and only what you decide is going to happen. absolutely I have been, as I mentioned, third ranker. I have been among the 10th ranker. I have been amongst the failures, and I have failed so many times that I've forgotten the counts of me failing, and I'm still standing. And believe you me, today my failures are of a different kind altogether. But the only thing that I keep doing is ठीक है कल का दिन गया आज नया दिन अच्छा इसने वैसे रास्ता बंद करा दरवाजा बंद किया कोई बात नहीं नदर डोर इसने बंद कर दी नदर डोर इसने बंद कर दी नदर डोर कितने डोर्स नॉक करूंगी देयर आर इनफाइनाइट डोर्स एंड आई विल नॉक देम ऑल Mhm. so that is the attitude I that believe the attitude only failure is just not trying. That's the failure. Not taking risks is a failure by default. I mean, exactly not trying, thinking that I will fail. It's just like it's the very popular बचपन में ही पढ़ते हैं ship is safe in harbor, but that's not what it's meant for. Similarly, exactly we were also meant to venture into the high seas, kiss the exactly tornadoes, and embrace the cyclones, and that's what exactly you know skilled sailor was never made in a smooth sea. It was never only those tempest में आप जब अपना रोइंग सीखोगे तभी आप एक क्या कहते हैं ना हुनर हुनर आपका हुनरबाज बनोगे आप तो वो चीज एकदम बहुत जरूरी है एकदम that is very important. that's So very ma'am, you were a mechanical engineer by education, हाँ जी and in your first semester I think you got selected in the army. no I am a mechanical engineer by choice, for which I bore the brunt of my father 3 months because he wanted me to take computers. But after my engineering, I was the first one to join the my MNC, then the first MNC in Vadodara, the Custos Calico. बोरिंग हो गया मेरे लिए वो काम यार आई मीन सुबह उठो जाओ वापस आओ वही काम करो so there used to be Sai Baba का मंदिर right so I used to walk up and pay him 50 पैसे 1 रुपए छोटा सा पेड़ and छोटा सा मंदिर I asked him कि I'm such a boring job it is I would like to get up to a job where there is a lot of adventure so I never knew whether he's listening or not listening but I used to do it eventually every day because I had to walk down home. I used to walk down even then. तब इतना हमारे पास वो नहीं होती थी कि बस हमारे घर तक हमें छोड़ने आ रही बस स्टॉप से लेकर के मेरा घर used to be good about 2.5 kilometers, 2 to 3 kilometers away, right? So ऐसा भी नहीं था कि मम्मा पापा हमें उठाने आ जाइए या नहीं हमें लेने आ जाइए because they had some other of their works. So, बाबा जी से हर रोज बात होती थी दुआ सलाम होती थी सो मजा नहीं आया तो मैंने अपने फादर को बोला कि यार मजा नहीं आ रहा लाइफ में तो बोलते ठीक है नेवर डू एनीथिंग दैट डजंट इंटरेस्ट यू बिकॉज यू नेवर विल ग्रो इन True, दैट true, सो आई टुक ऑन एमटेक में आई क्रैक्ड इट आई वाज जो 2% सीट मिलती है आई वाज वन ऑफ आई गॉट वन फर्स्ट सेमेस्टर एमटेक फ्लूइड डायनामिक्स फिर फ्लूइड एरोडायनामिक्स में आई हैड जस्ट एग्जाम खत्म ही किए थे एंड ये एक पर्चा सामने आता है कि जाओ बेटा तुम्हें देश बुला रहा है मैंने कहा ये किसने भरा
So I think I would have signed it. But yeah, that is what happened. Mm-hmm. So yeah, This destiny had its own cards, playing its own cards. yes. And so you were already a tough person, a tough young lad. So going into the OTA, I mean, because in those days, I mean, it was, you were one of those, you know, torch bearers of women in the army. So how was it? How was it in the OTA and the training, and how was it? I mean, some interesting experiences that we can So recount of. yeah, so hum like a bond. The very first day we reached, I remember then Captain Vinod, okay, signals officer, our company commander. शाम को हम दो से तीन बच्चे आए थे, जेब में हाथ डाले हुए बॉस के सामने खड़े हैं, कैप्टन विनोद के सामने खड़े हैं। तो कैप्टन विनोद ने सब सुना, कौन हो बेटा तुम, आराम से बात करी क्योंकि नेक्स्ट डे से कोर्स स्टार्ट होना था, उस दिन शाम से नहीं होना था स्टार्ट। अच्छा जी, बात बात करी। अब सो बात बात करी और खाना वाना खाया और रात को जैसे 12-12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे एलसी कमल नीचे, एलसी कमल को नीचे बुलाया जा रहा है। मैंने कहा हेलो, एलसी कमल कौन है? बट नाम कमल था तो आई वेंट डाउन। 50 पुशअप्स। मैंने कहा भाई प्रॉब्लम क्या है मुझे? अभी तो मैंने दर्शन भी नहीं दिया आपको कि हो क्या गया? 50 पुशअप्स हो रहे हैं। सर बट ओके 10 मोर। सर बट कैप्टन विनोद वाज नॉट देयर, समबडी एल्स वाज देयर। तो करते कराते 70-80 हमने हमसे करा दिए एंड एनी मोर क्वेश्चंस। तब तक हमें थोड़ी सी अक्ल जल्दी आ गई कि सवाल पूछने को मतलब है नहीं। तो वो 80 पुशअप्स करने के बाद जिसमें हालत पस्त हो चुकी थी क्योंकि आता जाता कुछ खा था नहीं हमें। तो Mhm. नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें बोला गया कि कैप्टन विनोद ने आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला है। अच्छा जी, फिर से वही कहानी। सीखा तो कुछ था नहीं तो फिर से जेब में हाथ डाल के चल पड़े। बोलते 70 वाज नॉट गुड इनफ फॉर यू एलसी कमल। आई सेड सर, बोलते हैं 100 मोर। uh, Navjot, I that lesson again. It was, I think I reported on 21st of September or something, Mhm. 20th of September. और आज 1999 के बाद आज भी अगर मैं तुम्हें आपको बता रही हूँ ये, तो मेरी क्या उन्होंने गत बनाई है। Mhm. फ्रंट Right. रोल, बैक रोल, 2 घंटे तक मैं सिर्फ ग्रीन रोल, फ्रंट रोल, ऑल काइंड Console ऑफ that रूल्स एंड रेगुलेशन वाज क्लियर, मेड क्लियर टू मी कि बॉस यू something is हैव wrong. समथिंग इज Something is रॉन्ग। wrong. Something is wrong. वहाँ पे बोला कि लास्ट में बाद में मेरे उस्ताद ने बोला बेटा यू आर नाउ अ कैडेट, ओके। ये जो बॉन्डबाजी ना, ये बात में बात की होगी, हाथ बाहर। इफ यू से दैट वाज आई ट्रीटेड डिफरेंटली बिकॉज आई वाज अ गर्ल, वेल द एग्जांपल इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। 12:30 Mhm. बजे यार, मतलब 12 मतलब Mhm. एक दिन पहले आई थी जब से स्टार्ट होना था कोर्स, दे जस्ट वेटेड फॉर गुड लीगल माय कोर्स स्टार्टिंग एंड वेलकम टू द एकेडमी हो चुका था। सो Yeah. दीज आर जस्ट अ स्टार्ट ऑफ इट एंड आप बैठे-बैठे द बेस्ट पार्ट वाज़ आवर मूवी पार्ट। मूवी में फॉलन होना और हमने बैठना। आई हैव दोज़ पिक्चर्स विद मी एंड वी वर स्लीपिंग टू द टू ग्लोरी। पिक्चर यूज्ड टू बी अमेजिंग, पिक्चर जो कि दिखा रहे होते थे द लेटेस्ट वन एंड हम लोग सो रहे। Because that's दैट the only time लाइफ, only time you get to sleep. जी हाँ, दैट्स द ओनली टाइम दैट वी गॉट टू स्लीप। खड़े-खड़े सो रहे, बारिश में सो रहे। मैंने हम लोग बेसिकली वी बिकेम अ एलियन ऑफ द डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। Right, 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 right. हैकल में घूमना, वी लुक द स्मार्टेस्ट इन हैकल। तो पहले हमने ये बंदा कितना अच्छा लग रहा है हैकल में जा रहा है। तो हमारी रीनू मैम हुआ करती थी, यू वांट इट, वेरी स्ट्रिक्ट, यू वांट इट। तो हमें ना मालूम पड़े हाँ बोलना है या ना बोलना, हाँ बोल दिया, ओके यू फाइव दोज हु सेड यस आउट, फॉलो आउट, वी फॉलोड। हैकल ऑर्डर 4 o'clock खत्म। नेक्स्ट 15 दिन हैकल ऑर्डर घूमते रहो। अमेजिंग लाइफ, अमेजिंग। या या Oh, that's actually very, and I mean, see, ma'am, we have talking about women in combat roles, and you have also spoken about it quite a bit. So let's just try to analyze that thing for the audience and for the people who don't understand the intricacies of how military works and किस तरह से ये dynamics work करते हैं. So how do you see this going further? Like women are now coming in command roles as well. So how do you see this all? And going further, how do we take this thing forward so that the young girls who want to join the army, they get some clarity on this.
Okay. So I will break down into many parts, right? First, the glamour part of being in the command role. Okay. Command role demands a different person altogether from you. Command is all about execution, planning, understanding the ground realities, right? So that is all command all about, and taking decisions even at the cost of few things for the betterment of the country and for the betterment of the larger group. That doesn't want, yes, it does want you to empathize, but in during those dire and critical situations, command demands you to be clear, having a clarity of thought कि अगर मैंने ये गोली में से दागने ये गोली का आदेश दे दिया, वो तो जाएंगे ही जाएंगे, मेरे भी कुछ साइड के लोग जाएंगे, True. मैं और जाएंगे, that is part and parcel of my job, but have I knocked off all other parameters, have I knocked off all other options of mine, or it is the easiest thus I have said, have I Right. used my practical brain, have I used other people to support me or not? It is a very big responsibility. I have full trust on those all the ladies and the ladies to come and the women to come who are going to be in the position of the command. Undoubtedly, the selection system is unparalleled. Undoubtedly, it is unparalleled. Now, I take this platform again to congratulate each and every woman who is coming onto that podium. Hats off to them. But as I kept mentioning, it's a start. It's a start. The time from which now the young girls are going to come and come into the combat positions. Glamour part now आप हथियार लेकर हथियार बंद होकर के गोली दाग रही हैं, जा रही हैं, कमांड पोजीशन पे ले रही हैं, लोगों को आदेश दे रही हैं, दैट इज द ग्लैमर पोजीशन बाय द वे. The tough position is that you have to get into it. And you per se getting into it doesn't mean कि हाँ हाँ हम तो जा ही लेंगे, हम तो कर ही लेंगे. ट्रेनिंग नहीं है बॉस. You getting into it, you being on the patrol, you being in the raid, at times sitting for the ambush for hours and hours together, right, along with your men, in the situation which is absolutely unfriendly, in the surrounded by people who are not your friends, not your countrymen. When taken into consideration, when into the action, anything can happen. You can die, your men can die, you can be captured, your men can be captured, you can be held, you can be held at hostage. You are ready, your men are ready, your officers are ready, your organization is ready, is society ready? True. If yes, if yes, then, and if yes is not the right question also, let's say yes. Then let's put two scenarios: officer under hostage, women under. There is a male officer under hostage and a women officer under hostage. You have to be very very clear. The society should not be demanding anything कि इसके लिए इसको छोड़ दो. ये नहीं होगा. Mhm. Okay. True. And then there are, I am speaking something very sensitive. Perhaps वो शायद as a woman I can speak. Right. As a woman I can speak. There will be certain people, certain हो सकता है कि because ये sensitive है शायद सारे ना बोल पाए. Absolutely. It needs courage also to speak up on this. Yes, so it's absolutely all right. You please go in combat. इससे बड़ा कोई मोटिव नहीं हो सकता जिंदगी का, इंटेंशन नहीं हो सकता. प्लीज डू दैट, but then there are things attached to it. Absolutely. Absolutely. We There are need to challenges. there are challenges, struggles, everything, and then there are aspects. I mean, person like me, if I say can say that okay, I do not want any paraphernalia attached to me, emotional also, because I'm ready to get into it, deep into it. जो होगा सो देखा जाए. Yes, that is the attitude required. Do it. तब ये नहीं हो सकता कि ये क्योंकि एक मेरा जेंडर ये है तो ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ. फिर वो जैसे आपकी मदरलैंड की बैरियर क्रॉस आप करते हो, एवरीथिंग फिनिशेस. यू आर एन ओपन जोन, एनीथिंग कैन हैपन. That True. thought process, when it comes into you, it goes down the last. And believe you me, I have got my postmates and my seniors who are made up of that. I can name them because, but I will not because they are still serving and they are now commanding. They are made of that grit. आप उनको मतलब उनको परवाह नहीं है. They are so passionate about it.
आप में वैसा गुर्दा है, आप में वैसा दम है, तो आप कॉम्बैट्स, आप किसी को भी मात दे सकते हैं। लेकिन Right. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कॉम्बैट्स में जाना है और एक हट है, बाल हट है, नहीं, सोच समझ कर आइए, बिकॉज़ इसके पीछे मुड़ने का आपके पास कोई स्कोप नहीं है। मज़ाक नहीं है, इट्स अ वेरी, वेरी सीरियस थिंग। Think into it. Think 20 years ahead of it. Think of all the paraphernalias. It is one of the proudest positions you can ever have. Nobody is saying तुम्हें जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा आने के लिए. But once you come, there are no ifs and buts. That is the commitment that is required. Absolutely. I think and that you really clarified how things are and what kind of attitude there you one needs to get into such combat roles as well as command positions. Because you will be Yes. leading men, you will be leading your commanding your men, and there can be no what you say concessions there. So There are that no is what I think. concessions. But I think Yes. we are moving on the right track also. Good initiatives are being taken, and I Yes. am sure that in the times to come we will see more and more women commanding, and Yes. even in the top at the topmost position, COAS will soon down the line we'll see a Inshallah. woman. Yeah, Inshallah. of course. I mean, I mean, ma'am, that absolutely we'll see in the times to come. Uh, Ma'am, there are certain things that generally there are some myths in the minds of students that sometimes when you are into patriotic fervor, that sometimes turns into jingoistic ideas. So where do we need to draw a line for the people sometimes? Yeah. Can you elaborate the jingoistic thing? Yes, for example, sometimes we feel that we fill ourselves with too much hatred. For example, boys or girls, particularly, they need to have a. Do we need to have a certain balance while we, have these things? How do you take this? So, if let me understand your question first, is it that in the patriotism, power of the patriotism, we end up disliking a certain country, people? Is that so? What you're trying to bring out? Particular sect of people or something like Okay. that. Yes, So yes, that. yes. Got it, So got it. So hatred about something, it. yeah. So, see, we as Indian are very diverse, right? India is a diverse country. So my question then comes is, there is not one sect available or there in our country. Our country is diverse in Absolutely. whether Hindus may be The subsectors, the subsectors const, in the Punjabiयों में constitution भी. recognizes 22 Yes, languages. exactly. And उसमें भी सब every 20 to 20 kilometers, 40 kilometers, the language changes, Directly. people changes, rules changes, everything changes. कहाँ कहाँ आप गुस्सा करोगे और कहाँ कहाँ आप animosity लाओगे? Ekdam. Specifically for the kids and the candidates and the aspirants who are coming, when I sit down with them, I talk of maturity. I talk of them as coming as officers. कहाँ पर लिखा है कि मेल सिख ऑफिसर, मेल पंजाबी ऑफिसर? Is the notification saying that? Is it this notification? I need a South Indian Brahmin officer vacancies of the officer, and the caste creed, is a caste creed mentioned, is a language mentioned? Kannada is a must, Punjabi is a must, Gujarati is a must, Maharashtrian is a must, or Assamese is a must. Nothing is written. You go in a Gurkha regiment and you learn Gurkha, the Gurkhali, right? You go in a Marathi language. I was made. I learned Marathi when I was posted in Maharashtra. I learned Rajasthani a little bit when I was posted there. I learned Punshi because and Srinagar mein I learned the language because I was posted there. You become one. You are an embodiment of the country because you are the officer not for one state, one sect. You are the officer for your country, and that name of the country is India. Absolutely. So if you're getting carried away, okay, let's not punish them for getting carried away. Please get carried away and then come back. My एक tagline हुआ करती थी. I did 4 years of I was posted in two of the NCCs. So मैं उनको बोलती थी एक चीज, जोश बहुत अच्छी बात है, जोश होना चाहिए, बट एनी जोश विदाउट होश इज ऑफ नो राइम और रीजन. जोश के साथ होश
बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट विल मेक यू एन ऑफिसर. जोश तो क्राउड में भी बहुत जोश होता है. Then the crowd should also become an officer, right? What's the point? If you don't have the right mentality, mindset, focus, direction, there's no point of having this for Josh. You'll end up disintegrating your men, your people, your country, your society. And believe you me, when I start with an officer has got ripple effects in the society too. Today, where I stand, I represent the entire Indian Army. When I speak, I pay respect to a lady. I stop a person from disrespecting a lady. I represent that organization. And when I do that, 10 people see, and they may not, but they will have an effect of it. So we have a lot of impact in our society. So when you get carried away, that is Josh. And then you have got the reins, जैसे घोड़े की जो रस्सी जो वो होती है, you are the chariot. Please get hold of those reins होश के साथ. कर क्या रहा हूं मैं या कर क्या रही हूं मैं? Is it right? Is it wrong? Then go ahead. I think a good head above the shoulders is always a good idea to have, because even in the defense forces or anything you're doing, it's not about, brash rudeness or anything like that. You have to No. strategize, you have to tactically operate, even when you're conducting a surgical strike for that matter. There is a lot of planning behind that. You cannot just go and just throng into it. You need to have Exactly. a very, very cool head, a very, very cool head. And Yes. that is a rush of blood. The adrenaline looks good, sounds good, but doesn't bode well in the long run. Exactly. So many people say that इतनी सारी OLQs क्या करनी है? People start learning OLQs, teaching OLQs. My request to them is don't do this. Definition से कुछ नहीं होने वाला. There are EI is there, reasoning ability is there, organizing ability is there. You can't learn the definition and become that. You have to start living this. Where is it utilized in Forge? It is utilized like you just mentioned. That's the reason I'm relating it to you. That where is it utilized? You use कि अच्छा यहाँ से जाऊंगा तो ये हो जाएगा. अच्छा यहाँ से नहीं जाता, पीछे से जाता हूँ. पीछे से जाऊंगा तो ये हो जाएगा. That is your EI जुगाड़. And then when you reason कि अच्छा यहाँ से जा रहा हूँ तो ये गड़बड़ हो जाएगी. That is your reasoning ability. अच्छा अब ये decide हो गया यहाँ से जाना है. अच्छा इसका बैकअप प्लान भी करना है. सुन इतने टाइम तक मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा तो तेरा जो आधे घंटे बाद वाला D+1, D-1, D+20, what are these are timings? That is organizing ability. बॉस बहुत सोच समझ के बहुत ही उम्दा तरीके से इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर दिया हुआ है. एंड एक एक चीज जो भी आप बोल रहे हैं नवजोत सर, it is what really makes an officer the officer. True, man. So, Absolutely. yeah. So, I mean, So, I'm passionate about this entire thing. You can go on and on again. yeah. See, the thing is, basically, I generally feel my personal ambition and motto in life is to contribute in creating men and women, young boys and girls of some metal, because Yes. officer one we not everyone can become an officer, get into Mm. the ranks, but we also have this responsibility as maybe we have to create more leaders, so that when we're going into the coming 25, 30, 40 years, we have to, if we have these ambitions कि हमने वो जिंगो से भारत मेरा भारत महान, बिल्कुल मेरा भारत महान है, बट हमें उसको बनाने में जो योगदान देना है, उसके लिए हमें अपने आप को परिपक्व बनाया है कि नहीं बनाया है. कहते हैं ना, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, हीरे को जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है. तो Very यही चीज है nice. ना कि हमें अपने आप को अगर हम तपाएंगे नहीं, पकाएंगे नहीं, और वो एक वैल्यू बेस्ड अपने एक ग्रोथ नहीं करेंगे, तो हमारा Yes. देश अंदर से, बाहर से अच्छा दिखेगा, अंदर से खोखला रह जाएगा. तो हमें Yes. वो एक मजबूत, एक कहते हैं रीढ़ की हड्डी, जैसे आर्मी में कहते हैं, योर स्पाइन हैज टू बी इरेक्ट. So Yes. morally, spiritually and physically. So morally also we have to imbibe those qualities. और मेरी ममा हमेशा, मैं बड़ी बार कोट करता हूँ, माई ममा ऑलवेज सेज कि बच्चे ना किसी एक के नहीं होते, बच्चे समाज के होते हैं. तो हम Exactly. सबकी वो ये जिम्मेदारी है कि बेशक हम कहीं किसी भी रोल में हो, हमें उनको सही रास्ते पे लाना हमारा फर्ज है. तो यही Yes. आई थिंक, इस तरह से अगर सब लोग हम सोचेंगे, मतलब देन आई थिंक वी कैन क्रिएट अ बेटर सोसाइटी इन द टाइम्स टू कम.
Very true. So, and Very, you very rightly pointed out how, we need to build those qualities around and create that, bouquet, a bouquet of those, beautiful bouquet of flowers, which has all the true. diversity. You need to have Yes. tenderness. You need to be Yes. strong. So all these mixture of qualities, like Sam Manik Shaw, he is an embodiment of all this. I mean, one of the military leadership. That is, these are the leaders we need to emulate, Yeah. and that, yeah, that's about it. So we can, that's a very interesting thing to talk about. We can go on and on for that as well. uh, Yes. Little bit, ma'am, going into if whatever unclassified information you can share about Operation Parakram in Rajasthan. So whatever. I mean, this that area that was a different zone altogether. I would not like to dwell much, but though Yeah, where all we because went I and why. understand, being Yes. serving the bureau, I understand we should not Yeah. reveal the classified information. Anything Yes. that is open source, we'll try to do that. It's like, see, there was Op Parakram. We all shifted from our bases. That is all I would like to say. Where all we went, what all we did. That I would like to keep it likewise only. Yeah, yeah. That I would not like because we used to keep moving I from. understand. I completely understand that because So I that have part, already. let's not touch base because Yeah. I won't be comfortable. Let's talk about Srinagar floods, your role in Srinagar floods, for which you were Yeah. given the GeoScene medallion. So let's talk about that. Yes. Yeah. So this is a very. This is again. We are all given. You know, Chief of Army's commendation, Army staff commendation. So I was not given that, right? So I was given a golden medallion for that. How it Okay. really shaped up was again a surprise for me. Of course, and I don't know whether I've spoken there in some forum or not, but हम लोग उस दिन भी हमें मालूम था कि 5 सितंबर की बात है, 5 या 2 सितंबर की बात है, झेलम में से पानी निकलता हुआ बीड़ी बाड़ी के Yes. अंदर भी वहां पर अर्जुन का मंदिर है, एक मंदिर है अंदर, 5 पांडवों का पानी वहां आने लग गया था। नॉर्मली हम पानी मंदिर के अंदर जा सकते थे, लेकिन 2 सितंबर के बाद हम मंदिर में जा ही नहीं पा रहे थे। Okay. So the things were on and we had told पानी रास्ता आ रहा था तो it was on the I think 5th of September या 4th की नाइट है, रात को हम 2 बजे से मैं ऑफिस जा रही थी, वापस सारी गाड़ियां हमारी बीड़ी बाड़ी के अंदर आने लग गई। सो हाँ, दैट वाज अ 2 बजे इतनी सारी गाड़ियां, गेट खुलते नहीं है, ओके, तो 7:30 के बाद गेट खुलते नहीं थे। I reached home and my husband was fast asleep. My little daughter was also there. My mother was also there. My daughter was hardly not even a year old. Yeah, she was not even a year old. No, she was a year plus. Yeah. So um, I just told him कि यार ऐसा होता नहीं है, तुम ड्यूटी क्लर्क से पूछो कि हो क्या रहा है। तो he says कमल you're getting paranoid and मैंने कहा नहीं यार, ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफस्टाइल्स हैं, देखो आप। तो ही Right. आस्क्ड हिज बिग पर्सन, बोलते नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, पानी जरूर आ रहा है पर इसके अलावा और कुछ नहीं है, हो सकता है पानी के कारण। 2:30 बजे होंगे हमारे को सोते सोते, सुबह मुझे 4:30 बजे मेरी पता नहीं क्यों आंख खुल गई एंड पानी हमारे घर पे ऐसे ही नॉर्मल चलते कदम वाले जैसे नॉर्मल बारिश जैसा आता है, हमारे घर में नीचे आना स्टार्ट हो गया था। आई टोल्ड हिम बॉस ऐसा करो तुम उठो, ही वाज हिज ऑन ऑर्डिनेंस ऑफिसर, बोले तुम ऐसा करो तुम अपने यूनिट में फोन करो एंड तुम जाओ। अभी भी कम्युनिकेशंस वर ऑन एंड देयर वाज अ क्रैकलिंग साउंड एंड ही सेड, उसके ड्यूटी क्लर्क ने बोला साहब पानी तो हमारे यहाँ भर रहा है, अगर आप हो सके तो आ जाओ। सो आई टोल्ड माय हस्बैंड यू टेक द व्हीकल एंड यू टेक व्हाटएवर इज रबर विद यू एंड वेयर रबर्स एंड यू गो। दैट वाज द ओनली व्हीकल जो कि बची उनकी, जो गाड़ी लेके जब चले गए, बिकॉज उसके बाद में जब बाय द टाइम आई ड्रॉप, आई वाज इन द फर्स्ट फ्लोर, बाय द टाइम आई केम डाउन टू ड्रॉप हिम, राइट, पानी हमारे एंकल्स तक आना स्टार्ट हो गया। सिर्फ इतनी जल्दी, 4:30 से 5 बजे तक। एंड उसके बाद में नवजोत पानी ऐसे भरा, वी द लेडीज, हमारे घर के पीछे वाली लेडीज वर शाउटिंग क्योंकि वो देवर ऑन द लोअर स्ट्राटा देन आवर्स, उनके यहाँ पे पानी जल्दी भर रहा था। वी डिड नॉट नो हाउ टू टेक देम आउट ऑफ द ट्रैप। पहले तो
कुछ नहीं किया, हमारे पीछे गैलरी थी तो मैंने कुछ नहीं किया। आई जस्ट, मेरे पास जो भी सामान था और मेरे पास जो भी तोड़ने वाला सामान था, टूटने वाला था सामान, पहले तो अपनी खिड़की को खोल खाल के, देवर ग्रिल्स तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैंने उनके, इट वाज डायगोनल, तो मैंने उसको डाला और तोड़ने की कोशिश की, सो दैट जो पानी आएगा कम से कम कुछ तो उनके पास होगा, बिकॉज वो एसएफ क्वार्टर्स थे, सेपरेटेड हम्म, फैमिलीज के क्वार्टर्स थे। सो उनकी आवाज फिर बाहर आने लगी, बिकॉज आई कुड ओनली सी दैट कि somebody was, थपथपा रहे थे बहुत जोर जोर से। एंड देन समहाउ उनकी आवाजें जो और बाहर आने लगी, एंड देन मुझे अचानक से ख्याल आया कि मेरे घर के नीचे, राइट, देयर वर टू फैमिलीज। एक के घर में अभी नया बच्चा पैदा हुआ ही था, एंड दूसरे वाले घर में पेरेंट्स रहे थे, उसमें जो मदर वॉज पैराप्लेजिक। वी नॉक हम्म, द डोर, एंड मैंने अपने वो ऊपर वालों को बुलाया कि प्लीज आई नीड योर हेल्प, बिकॉज ये लोग तो कोई नहीं जाग रहा, या तो ये लोग पानी के अंदर, इनका पानी का दम, बाय द टाइम अगेन उनकी फ्लोर वॉज फुल। जब हमने उनका दरवाजा, पानी जब पूरा सब जगह से बंद हो, ठंडियों का मतलब ठंडी स्टार्ट हो ही रही थी तो सब कुछ हम्म, बंद था, मालूम नहीं पड़ रहा था। व्हेन वी नॉक द डोर्स एंड ओपन, दैट इज व्हेन उनकी आंख खुली और उनको रियलाइज हुआ कि उनका सारा का सारा घर वाज फ्लोटिंग इन वाटर ओनली। वंस दे केम आउटसाइड, बच्चा वाज लाइंग इन अ क्रिंच, राइट, वो जो होता है ना, बच्चा वाज फ्लोटिंग इन वाटर। द वो नजारा आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते। उनके absolutely. घर में एक बच्चा, एक लड़की थी छोटी, ऑफिसर वाज अगेन माय co-officer. Ma'am was as such recovering from her pregnant, this one delivery. Bachcha was very very small. She kept shouting, "मेरा बच्चा अंदर है," and we went inside. बच्चा लेकर आए, एंड इतने में दूसरा ऑफिसर को हमने बोला था कि तुम इनका दरवाजा नॉक करो, बिकॉज इनके पेरेंट्स ओल्ड है। समाओ बच्चे को पकड़ा, हम ऊपर लेके गए। अब रह गए वो मैम, उनके ऑफिसर को निकाला तो, और उनकी वाइफ को निकाल के ऊपर भेजा, लेकिन उनकी मदर रह गई, एंड शी वाज ऑन द हेवियर साइड। पानी, घर बंधा हुआ है, रूम के दरवाजे छोटे छोटे, बाहर निकाले तो निकाले कैसे? दैट लिटरली लेडी सेड, आई डू नॉट वांट टू लिव, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, आई एम ओके, वैसे भी मेरी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रह गया। नवजोत, वी टाइड हर टू अ चेयर, चार ऑफिसर, मैं, जबरदस्ती जबरदस्ती। हमने भी टाइड हर टू अ चेयर, चार ऑफिसर इंक्लूडिंग मी, मैं, ऊपर के दो ऑफिसर और उनका बेटा जो भी अगेन ऑफिसर था। वी गॉट देम आउट। हमारी खुद की हालत खराब हो रखी थी, बिकॉज वी हैड डन, बाकी उनको भी चारों को एकदम निकाला। एकदम। यस, बाय द टाइम मेरे घर तक लेकर आए, मेरे घर में पानी आना स्टार्ट हो गया था। सो वी हैड ऑल द लेडीज इन माय हाउस, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, किसी को नहीं पता। तो हमारा, आई मीन, आई डोंट नो हाउ आई मेंटेन माय काम कूल। ऐसा ठीक है। द ओनली थिंग दैट गुड हैपेंड वाज, जो हस्बैंड मेरे तब तक जो 5:30 के जा चुके थे, 5, 5:15, ही केम बैक विद अ बोट। फिल्मों जैसा लगता है लेकिन है नहीं, बिकॉज लिटरली सी पीपल पानी में बह रहे हैं, रो रहे हैं, लोग एटिक पे चढ़ रहे हैं। वी ऑल्सो केम, हम लोग भी अपने, मैंने अपने घर में सिर्फ एक बैग जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स में डाले और ऊपर वाले घर में उसकी एटिक में चढ़ा दिए। बाकी कोई चीज वैल्यू की नहीं थी, सब कुछ चढ़ा दिया मैंने। मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। हमारा सब कुछ बह गया, एंड एज द लक वुड हैव इट, हमारी पोस्टिंग आ गई थी। मेरी नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड की शायद आ गई थी, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हमारा सारा सामान गैराज में पड़ा था। That experience of losing everything, Navjot, was amazing. Was amazing. And that day and this day, I do not Liberating collect. also at times. It It's liberates you liberating. sometimes. It's Yes. liberating. So that when he brought the boat, I sent all the ladies, paraplegic Auntie Ji, my mother and my daughter, and that officer who was feeling unwell, उनको तो बोलते हैं कि मैम आप, बाकी सबने बोला आप भी चले जाओ। ऐसे नो, here I am not a woman, I'm an officer. There are many others who are women and children who are balanced. That's very nice of my husband to come here first. But they deserve it and they need to go first. By the time third, fourth, we were the last ones to be evacuated. हम लोग तो छत पे पहुंच चुके थे। हम तब तक पानी इतना आ चुका था। ये दिमाग में ज़रूर आया था कि हम रहेंगे, नहीं रहेंगे। मतलब इतना पानी था कि हम कहाँ तक जाते Mm. पता नहीं। बट हाँ, इतना ज़रूर था कि कोई ना कोई, आई मीन, दैट नाउ ये जब Something. सब कुछ हो गया, जब सब कुछ हुआ, everybody was getting felicitated after that of a long, long time.
my ये सारी कहानियां तो somebody asked कि कैसे मालूम पड़ा, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि नीचे वाला एरिया is getting flooded and how did you come to know? So बहुत सारी और कहानियां आने लग गई, सबको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले. So the GOC then asked many people कि आपको किस किस को फेलिसिटेट करना है. बहुत लोगों के नाम थे, मेरा नाम नहीं गया, डोंट वरी. काम मैंने क्या किया था, मैंने अपनी ड्यूटी करी थी. And we were all, after good about 6-7 months, we were standing there. अचानक से मेरा नाम बुलाया जाता है. Colonel Kamalpreet to come here. GOC wants to. मैंने कहा हेलो क्या हो गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं. और there is one person जिसका नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन काम उसने इतना किया जिसकी वजह से उस पूरे पैराफिनेलिया में किसी की जान नहीं गई, कोई मरा नहीं. She was the person जिसकी वजह से ये हुआ कि पता चला. She was the person जिसकी वजह से this man went and said, इसने कहा कि तुम बोट लेकर आना, हमें कुछ हो जाए, कम से कम कोई जाएगा तो वापस आएगा ना. She could have said कि मैं जाती हूँ, बट उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं. She said कि तुम जाओ, मैं यहाँ पर सबको संभालती हूँ. She was the person, she did not come up and say कि मैंने इसकी जान बचाई, इसकी जान बचाई, इसकी जान बचाई, which I am not. उनकी डेस्टिनी थी नवजोत तू बचे. And I'm thankful for all those other 3 officers जिन्होंने मेरी मदद करी. That's the leadership that we need. That's the leadership role that we need. That comes to Yeah. the fore in those tough times. Yes. Absolutely. That's a brilliant thing, actually. I mean, I have got only and only thanks to my GOC that he recognized that. मेरे लिए उस मेडलियन से ज्यादा मैं कहीं नहीं लिखती. आपने मुझसे राइटअप मांगा तो मैंने लिख के दिया. मेरे लिए उस मेडलियन से ज्यादा ये चीज बहुत मायने रखती है कि उनको yes, उनको ये दिखाऊं. That's all. That's the कहानी of that gold medallion. Absolutely, man. That's really wonderful. I mean, that's a lot of things that we can learn from that, and the young boys and girls putting, again, Chetwood credo, putting service before self. So that's, you truly exemplified that. A lot of that's the beauty of military leadership and leadership Yes. in general also. So Yeah. I mean, ma'am, after you put up your papers from the army, you joined the Amazon, I guess, right? Yes. You were selected in many companies, and you Yes. chose to join. So how was Amazon. the transition? How was the transition from military to the corporate, and Yeah. what So changes you felt? Leadership yes. So roles changing. yeah. No, I mean corporate world is different world. Let me be anybody and everybody who's transitioning to corporate world. Please come with your eyes open. Greener pastures on the other side. It always looks greener, undoubtedly, but it has got lots. And again, the struggles are there. Okay. So I've been really, while I was preparing for my transition, I had given a lot of interviews, and God has been very, very kind. I cleared Amazon, I cleared American Express, JP's, Wells Fargo, I am Shillong, I cleared, amongst few, Amarco, I cleared. But Amazon being Amazon, and also I was a bar raiser. So they were taking my interview for L6, and during the interview, they found me, perhaps they found me good. And they said, okay, fine, this girl's caliber, this woman's caliber is very good. We will take her for L7. So that was a very big responsibility altogether. I learned beautiful things. It's the first of the few realizations. It is not different from armed forces. Okay, the leadership is a must. Amongst other things that I realized was hard work is fine. What is the deliverable? Amazing thought was that struck me so beautifully. बस बातें बहुत हो गई, अब काम करके बताओ. काम बहुत हो गया, अब इसका आउटकम क्या है? एंड जब आउटकम हो गया, आउटकम खत्म हो गया, दैट इज नाउ पास स्टार्ट अगेन. It is what is different. Well, you know, I will compare one thing for I'll say it very, very blatantly. There is no organization as armed forces. कोई मुकाबला ही नहीं. Sorry, boss. I love Amazon. I love armed forces, but armed forces is armed forces. There is no organization as good as armed forces. The bond, the fallback system, the trust, the camaraderie. गलती कर लो तो भी घर में, गलती मतलब सीखो तो भी घर में, कुछ भी हो जाए वो भी तुम्हारे घर पे है, राइट? दैट थिंग यू जहां मर्जी चले जाओ आपको मिलेगा नहीं.
Armed Forces, the Amazon tested me for my operations. It gave me one warehouse, two warehouse, and almost three warehouses. And I closed down one, modified another. So that experience, what it gave me, it made me work under dire conditions. Uh, it made me have again build trust. It made me understand it is the process which really matters. People, it is how you drive the people which is going to really matter. It is it is when you give them their whys, if you make them understand, boss, you are the ones who are going to give pride to this warehouse. People start working. एंड अगर इंसान चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता शॉर्ट से शॉर्ट टाइम पे आई वॉज टूल आई थिंक 1.5 month to close down my Dell 2. I was given good about 5 months. Yes, 5 months to uh, install or start a new warehouse. बस 5 महीने में वेयर हाउस नहीं बनता, 2 महीने में वेयर हाउस बंद नहीं हो सकता और उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते आप। मगर अगर ये सब कुछ हुआ है एंड कैसे किया है, मैंने किया नहीं यार, मेरी टीम ने किया। यस, कैसे हुआ? प्लानिंग 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 प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्लानिंग एग्जीक्यूशन प्लानिंग। It has taught me the brilliant gems of life. It has taught me the why, the how, very in depth how, and the outcome, the deliverables. I've So realized. that's the difference you kind of find from the military style of leadership and little bit in the corporate, little transition, little difference. There is, You know, see, there is Navjot, a lot of आप ये मान के चलो अगर मुझसे गलती होती है मेरी फौज में, मुझसे गलती होगी, मुझे डंडा पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे नेक्स्ट डे इज अ न्यू डे एंड मेरा डंडा जो है बोला जाएगा चल अब स्टार्ट कर। बाय द वेरी वर्च्यू ऑफ बीइंग अ कॉर्पोरेट ऐसा होता नहीं होगा, वो कर नहीं सकते। ठीक है, आप अपने बंदों को मारते नहीं हो, अपने बंदे को मारते नहीं हो, काटते नहीं हो। Corporatism, cutthroatism, it is there. I'm being extremely, what should I say? मेरे को मेरे सारे अमेज़न के दोस्त मारने वाले हैं इस कॉल के बाद, राइट? दे आर गोइंग टू किल मी लाइक एनीथिंग कि कमल तूने क्या बोल रही? इट्स अ फैक्ट। क्या बोलूँ मैं? यू वांट मी टू नाइस नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं होता जी। देयर इज नो हायरार्की सिस्टम, देयर इज नो कटथ्रोटिज्म, देयर इज नहीं नहीं आपको निकाला नहीं जाएगा, नहीं नहीं जी, देयर इज नो लेइंग ऑफ, नहीं है। ओपन योर आईज, इट इज देयर। इट इज सर्वाइवल है, बस I सर्वाइवल can ऑफ। completely understand. I have also worked in the corporate for a good 2 or 2.5 years in the beginning of या my career. So I या can completely understand how these things works, and I can totally relate to it as well. यस Ma'am, the recent hat that you're wearing in guiding and mentoring students, and you have been very successful in that as well. So apart from the OLQs that we have discussed already, how should the students deal with anxiety, stress while chasing their dreams, while pursuing their dreams, and how can they, you know, should they be crazy and all frenzy about preparation, or there is need to strike a balance between their school and college studies as well as their preparation, not for defense but other competitive exams as well, because ओके। these days we see lot of hype is being created by social media as well, which gets people into preparing for examinations which they know nothing about exactly what is going to happen there. So that demystify that for the aspirants who would get benefit from your experience on that front. So Navjot, I'll relate it to my these anxieties come when there is ambiguity, right? आगे क्या होगा? क्या करूँगा मैं? क्या करूँगी मैं? किस तरह से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी? तो I'll relate to my zone of ambiguity. When I was wanting to come out of armed forces, we were in the period of those मिलेगा पीसी, नहीं मिलेगा पीसी, और मेरा ये प्लानिंग हो चुका था कि यार आगे क्या? बिकॉज़ हमारा पीसी आना बाकी था। सो मैं बाहर जाऊँगी तो मेरी पेंशन होगी, नहीं पेंशन होगी, और अगर मेरे को जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, मेरा स्किल सेट क्या है? Believe you me, I am thankful to my seniors. There were many seniors to me. My this one, there were Vikrams were there. There were other my postmates also there, friends also there. Colonel Kaswa says, "Ma'am, Pethu, ma'am." Their wives also were very close friends to me. They said, "Sit down.
let's sit down. So I sat down and I made a planning of it कि okay boss, मेरे पास ये इंजीनियरिंग है, ये एमबीए है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना है, मेरे किस काम की आने वाली है? ओके, लेट्स से कि मैं बाहर निकल जाती हूँ, तो मेरे पास स्किल सेट क्या है? मेरे पास लेट्स से पेंशन नहीं है, तो पेंशन नहीं तो महीने का खर्चा कैसे निकलेगा? ठीक है? लेट्स फॉरगेट दैट आई वाज़ मैरिड, लेट्स फॉरगेट फॉर टाइम बीइंग, ओके? सो मेरा खर्चा कैसे निकलेगा? मेरा पढ़ाई का खर्चा कैसे निकलेगा अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ? मेरी बच्ची का खर्चा कैसे निकलेगा? सो आई जॉटेड डाउन ऑल माय स्किल सेट्स, 1 पेज फुल। मुझे रियलाइज़ हुआ ये तो काम नहीं होगा। I started upgrading myself. I started upgrading myself and I started applying in all the places I thought my skill set is going to be of use. Then my very first skill जो मैंने apply किया था वो है I am Shillong में. And I got through. I am Shillong में. I got through as the security. उन्होंने मुझे security officer लेना था. बाद में after my interview they said okay security head. Once they came to know that I've done psychology, they clubbed both the requirements, right? So I was taken on board, but मेरे papers मैंने तब तक pursue नहीं किए थे. So what I'm trying to now bring out is anxiety handling. Jot down each and everything. First, what is that you have? पैसा कमाना बहुत आसान है. Please, when I'm saying this, why am I saying this? Because we are all wanting to earn money through job. Biggest block, biggest block that we have. कि मैं इसी तरह से पैसा कमा सकता हूँ. So once you're jotting down your things कि okay मेरे पास ये फलानी है, उससे मुझे जॉब मिल सकती है, या फिर मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप खोल सकता हूँ, या मैं क्या-क्या ट्यूशन कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, ऑनलाइन खोल सकता हूँ, पॉडकास्ट कर सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं स्टूडियो खोल सकता हूँ. What is stopping you? Write it down. Where are your backup plans? Plan B, plan A, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, मैंने Z तक, उसके बाद में अल्फा बीटा भी है. But because you're focused, मेरे को तो यही करने का है बॉस. मैं अमेज़न में ही जाना चाहती हूँ, और मुझे अमेज़न में नहीं मिलेगा तो मेरी नैया डूब जाएगी. किधर लिखा है बॉस? जेपी True, true. मॉर्गन Very ही well मिलना said. चाहिए. So Very you are focused on tunnel vision, and the tunnel vision doesn't happen. You feel dunya has crumbled. Boss, open your eyes. There is no tunnel vision. There is no one door. The it is baked. It is open. Look around. Look around. Today also when I have been very blessed that at opportunity that I get, I share it with everybody. They say मुझे वहीं जाना है. No, don't be fixated. Go anywhere. Get that. Get that. Get that experience. That experience is going to make you fly. आपको एंजाइटी हो रही? ओके, एसएसबी में मैंने जॉब करी. फोक्स, मेरी पहली जॉब एमएनसी, 3500 रुपीज, 1998. 3500 रुपीज कट करा कर 2700 रुपये हाथ में आ रही थी. सिर्फ 2700 रुपये. उसके लिए सुबह में 5:30 बजे उठती थी, 7 बजे की बस पकड़ती थी, जब मैं चल के जाना पड़ता था, रात को 8:30 बजे घर आती थी मैं. राइट, घर से 40-50 किलोमीटर दूर जो एमएनसी थी उसमें मैं जाती थी. बॉस, बैकअप प्लान मेरा क्या था? ओके, मुझे चीज अच्छा लगना जरूरी था. तब मेरी रिक्वायरमेंट थी एक्सपीरियंस. आई टुक दैट एक्सपीरियंस. टेक एन एक्सपीरियंस. जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती, जिंदगी यहाँ से स्टार्ट होती है. एसएसबी इज वन पार्ट ऑफ योर प्लान. प्लान जीरो है वो आपका, अफसर बनना. हो जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंजी होना कि ओह माय गॉड मुझे अफसर ही बनना है. क्यों? आंसर मी ये दिस बहुत क्वेश्चन. मैम, ये प्रॉब्लम काफी जो बच्चे मेरे से भी बात करते हैं वो कहते हैं कि सर हमें तो क्लियर करना ही करना है, मैं जान लगा दूंगा. वो सब चीजें ना थोड़ा सा उन पे प्रेशर भी डालता है, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा. नहीं तो आपको क्यों बनना है अफसर? मैं बताती हूँ आपको अफसर, आपको अफसर बनना है. आप आर यू मैड क्रेजी पर्सन फॉर डूइंग एनीथिंग इन एवरीथिंग? देन बॉस आपको कहने की जरूरत है, आप हो जाओगे. ना उठा देना मेरा, अगर नहीं होगे तो हो जाओगे. बट वेन योर वाई इज गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, यार मेरी इज्जत का सवाल है, आईटी का है, मेरे पे ओजी बहुत अच्छी लगी, या वाइफ्स बहुत अच्छे लगे, या एयरफोर्स की ड्रेस बहुत अच्छी लगी, देन बॉस योर डायरेक्शन इज वेरी डिफरेंट. देन योर मैडनेस का वाई बहुत डिफरेंट है.
एकदम। Your why is very shallow. Your why is on the ice breaking वाला जो क्या कहते हैं पतली सी आइस है, फ्रेजाइल आइस पे आप चल रहे हो. जब आपका why ही इतना strong नहीं है, no. I again keep telling my students, I'm not a very sweet person to talk to. I speak very brash. I speak very मतलब ठोक बजा के सच बोलती हूँ. बुरा लगता है, कोई बात नहीं. Doesn't matter. I'm good for health. Okay. So अपना वाई क्लियर करो, अपनी शक्ल जाकर के अपने आप को देखो आईने में, बोलो कि बॉस करूंगा तो क्यों करूंगी, मेरी जिंदगी कहाँ जाऊंगी. मैंने भी तो अपना वाई ढूंढा ना. मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझसे ना हुई यार, नहीं होगा मुझसे इतना सारा काम, करना ही नहीं है मुझे. You also sit down with yourself and say कि मुझे क्यों करना है. And once your why is clear, nobody can stop you. बाकी सब कुछ आसान हो जाता है. एकदम। So anxieties, how can you handle your anxieties? पहले तो अगर आप इसे गवर्नमेंट जॉब की तरह कह रहे हो, लेट्स बी वेरी नॉन इमोशनल. आपको गवर्नमेंट जॉब दिखती है, राइट? इट्स अ गवर्नमेंट जॉब. देयर आर n नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स. देन गो विद द क्लैरिटी कि मुझे ये गवर्नमेंट जॉब क्लियर करनी है. मेरा सवाल ये होता है कि फिर यूपीएससी क्यों नहीं क्लियर करनी, वो भी तो गवर्नमेंट जॉब है, राइट? Then you are sitting in front of a very different kind of person. I'm going to ask you 10,000 questions. Why not UPSC? क्योंकि हार्ड लगती है, राइट? यूपीएससी डिमांड्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ डेडिकेशन ऑल टुगेदर. आपको साल लगाने पड़ेंगे, उसके बाद गारंटी भी नहीं है आपकी. तो Yes. So, boss, have all government jobs की लिस्ट बना लो, सब में मेहनत करना स्टार्ट करो. एंड इफ यू आर इनटू अ गवर्नमेंट जॉब रहे हो, कंपटीशन आप जैसा सोचने वाले बाकी पूरी पॉपुलेशन है. यू आर फाइटिंग ऑल अगेंस्ट वन, राइट? सिट डाउन ऑन इट. नोबडी इज डिनाइंग इट. बट मैं आपको अभी भी एक चीज कह देती हूँ, यू आर मिसिंग वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. दिस इज नॉट व्हाट मेक्स यू द पर्सन ऑफ द लाइफ. You the person is what makes you the person is your own personality, your thought process, your approach, your mindset. तुम अफसर बन जाओ, माइंडसेट गलत है, तुम तब भी नहीं खुश होंगे. ट्रू. ठीक है. तुम धीरू भाई अंबानी बन जाओ, राइट माइंडसेट, तुम कहीं पहुंच जाओगे. खेल बहुत प्यारा है, समझने की देर. एंग्जाइटी करने का कोई मतलब नहीं. आई हैव गॉन थ्रू दैट एंग्जाइटी एंड रियलाइज्ड देयर इज नो पॉइंट. मेक अप योर have a list of your good points, have a list of your minus points, have a list of all those things that you're afraid of, and then handle it head on, face it head on. जो होगा उसको सामने रखो, जो नहीं होगा उसका वाय निकालो, क्योंकि नहीं होगा. मेहनत करने को तैयार हो तो करो, नहीं करने के लिए तैयार हो तो टाइम मत वेस्ट करो, बिकॉज टाइम इज द थिंग दैट यू डोंट हैव इन लग्जरी. सो स्किल सेट, आई एंजाइटी थिंक ओवरऑल अपना स्किल सेट अगर मतलब आप अपने आप की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, पर्टिकुलरली किसी जॉब के लिए नया तैयार करके, अगर हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं लाइफ के लिए, तो आई थिंक yes कोई ना कोई कहीं पे भी हम जाएंगे हम अच्छा करेंगे. तो वही मैम का exactly मैसेज यहाँ पे वही है. व्हाट इज मैम ट्राइंग टू से हियर टू द एस्पिरेंट्स इज just get your whys very clear. The hows will fall in place. Get your whys yes very clear. So that is the yes approach. Yeah. So that is you have to imbibe in yourself also. yes So मैम yes और क्या मतलब बच्चों के सामने क्या एवेन्यूज है गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी, जैसे बच्चों को प्राइवेट सेक्टर में, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट तो लिमिटेड जॉब भी प्रोवाइड कर सकती है ना. Government can only do so much. So we need to diversify also. We need to not get too paranoid and fixated on just getting into the government colors. And our motivation mostly is, as you mentioned, very shallow. It is fixated on maybe I want to wear that uniform, but what after that? Do you get the XYZ of the job that you're trying to get into? उसके बारे में समझ के फिर हम उसमें जाएंगे, तो आई थिंक फिर बाद में people quit. People quit while entering into jobs. They quit because yes that doesn't suit their that does- personality also. exactly. So So I was few days back talking to the industrial council of the my district. He said again, he repeated exactly the same words. Job तो उतना ही है, and दिन ब दिन जो government jobs तो कम ही होने वाले हैं. कम हो रही है. We don't want that. He said we don't want people to be doing and getting into jobs because वो इतने ही रहने वाले हैं.
और रादर इतने कम हो जाएंगे. वी आर वांटिंग देम टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप. आपको पढ़ा क्यों रहे हैं? आपको पढ़ा क्यों रहे हैं? आप कंप्यूटर्स में जा रहे हो, मैकेनिकल्स में जा रहे हो, आपकी खुद की कंपनीज क्यों नहीं हो सकती? तो मेरे जैसे बंदे ने बोला कि ओके, लेट मी बी द स्टूडेंट एंड लेट मी बी द पर्सन, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन. पैसा कौन देगा? बोलता गवर्नमेंट दे रही है. मैंने कहा ओके. बोले मुझे टेक्निकल नॉलेज कौन दे रहा है? बोले गवर्नमेंट दे रही है. बोले मुझे ट्रेनिंग कौन कराए? बोले गवर्नमेंट करा रही है. सब कर रहे हैं. It opened my eyes. I said, नहीं नहीं, you are lying. I didn't say the word lying. नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. Might be it is in process. Now, Jyoth, he opened up the pamphlets right in front of me, It is and I was, happening. It is happening. it is happening. It is Startup India is happening. A lot of other initiatives which give prioritize certain sections also. For example, exactly. women they give incentives. I Mudra was scheme is about, there. yeah, I was about to tell you. I collected few ladies few days back, and they are our own revered widows, and I said, I'll support you. Okay, I'll support you. और आपने कुछ नहीं करना है, आपकी इंक्लिनेशन देनी है कि यस आई विल गो टू दैट ट्रेनिंग. किट आपको मिलेगी, लोन आपको मिलेगा, आपको रिटर्नेबल लोन नहीं है. यू विल बी गिवन जस्ट द मनी, यू जस्ट हैव टू गो एंड डू दिस ट्रेनिंग, नथिंग एल्स. 15 को बुलाया था, 2 ने हाँ बोली है. तो हमारे में जो ये बैठकर जो the inertia of getting on to thing and doing that thing, we have to, ये वो टाइम ही है जब हमें करना ही पड़ेगा. Believe you me, Navjot, go back years together, years and years together. हमारे दादा परदादा, we were not job oriented people, by the way. हमारी खुद की Right. दुकानें हुआ करती थी, हम अपने हाथों से काम करते थे. Farmer is an entrepreneurship, cobbler is an entrepreneurship, sonar is an entrepreneurship, जो welder था वो entrepreneurship. You name a person was an entrepreneurship. वो तो जॉब की हमें आदत डाल दी गई उस एम्पायर में, जिसमें दैट वाज अ कोजी थिंग कि हमें शेल्टर मिल रही है, एंड दस दैट थिंग वाज बिकॉज एट्रोसिटी से बचने के लिए. अदरवाइज हमारी खून में एंटरप्रेन्योरशिप ही है. वी वर मर्चेंट्स ओनली. So I True. think we need to get back to that merchant wala thought process. And And it I is talk to beautiful. many of my Yeah. friends also in the IAS, the IPS, or the other civil services. Mm-hmm. So Mm. they also point to the same fact only that Yeah. these things, government sector is eventually, there are certain restrictions as well when you get into the Yeah. government. Huh. You won't get that creative freedom as well. So you should Yes. know what you're signing up for. It is not all Exactly. that beacon lights with your VIP entries. It's not about that. It's the hard yards. You have to read too much. You have to frame policies. You have to be 24/7 round the clock. You have to be available for public service. So be aware when what you're signing up for, what you're going to do. So that Yes. is like that clarity also should be You there in the youth. you you may think नवजोत की कितना अच्छा लगता है उस चेयर पे बैठ कर के आदेश पास करना, एक गुग्गी मार देना. भाई साहब, वो गुग्गी मारने के लिए उसकी एक-एक जान जाती है वहाँ पर, राइट? Because वही you're तो अच्छा है. accountable. You're Yes, accountable. they're accountable. They're really accountable. Not easy. Because Mm. those signing between the dotted lines with that green pen sometimes Yes. come with a lot of repercussions. Yes. Personally, also, I have been very careful about doing these things. So it is how it is. So that's That doesn't mean you should not go. One should not go there. Please go there. But at the same time, who is going to shape this country? You folks are going to shape the country. Karo, why? When how we are, I'm very proud. You and I are very proud of Amol, MDH, Catch. Then you and I are very proud of Jade Blue. Okay, Parley G, we are very proud of. What is this? These are these people who did entrepreneurship only. We are proud of very what Maharashtra ke Dabba Walas. I'm so proud of them, sincerely speaking. so we Beautiful have to change that entrepreneurs. narrative. We have to, Yes, get that alternative narrative also along the way. That so exactly. that is like you mentioned, ma'am, anxiety इससे कम होगी आपकी. बच्चों में anxiety Yes. इससे कम होगी कि हम एक ही I, चीज कर सकते हैं. you reminded me of this thing when I was jotting down कि मैं अगर बाहर आऊंगी मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो मैं क्या क्या करूंगी. मैंने कहा मैं एक फूड की सर्विस खोल डालूंगी. Absolutely. So what's wrong? Seriously, आपको पैसे ही कमाना है ना. तो किधर लिखा है कि मैं एक एमबीए पर्सन या पीएचडी पर्सन आई कांट डू ए डब्बा वाला
services, I should be able to do it better, right? So you nicely brought it out. मैं एक लॉज खोल सकती हूँ, धर्मशाला खोल सकती हूँ, दबोवाला करा सकती हूँ, आई कैन ओपन अप अ मेड सर्विस एंड आई कैन चेक इलेक्ट्रिशियन सर्विस. क्या नहीं कर सकते हो आप? बिल्कुल. सो तो ये एंजाइटी. एवेन्यूज या. अभी सिर्फ वही 12th 11th के बाद वही 12th के बाद डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है सबको. देयर आर लॉट ऑफ एवेन्यूज. लर्न व्हाट यू आर मेड फॉर. ट्राई टू Yes. एक्सप्लोर बिकॉज़ हमारे टाइम पे मैम इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं था. नाउ यू हैव Right. एवरीथिंग ऑन द इंटरनेट. गो सर्च इट आउट एंड फाइंड व्हाट इज सूटेबल फॉर यू. Exactly. Exactly. So anxieties, sincerely speaking, anxieties को handle करने का बस एक ही तरीका है. Have all kind of plans with you. And राइट. आजकल तो मैं ये बोलना चाहूंगी because I also believe in that. One hustle plus one hustle. एक के साथ एक साथ साथ में कुछ ना कुछ होना ही चाहिए. इतना तो क्या है, 24 घंटे ही तो है. मैंने कहा एग्जैक्टली, लियोनार्डो विंची अगर 22 लैंग्वेजेस 22 काम कर सकता था, तो हम इस जमाने में 22 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कर ही पाएंगे, राइट? So एकदम. please, let's not question. Human being is capable of so many things. Let's not start undermining ourselves. We can do many things. Absolutely, ma'am. That is actually the message for the young brigade Yes. that needs to prepare themselves and just rise beyond that keyboard generation. We Yeah. just spamming that. Just build your character also. That value Yes. based education. I mean, there Yes. was a time when we used to sit with our grandparents. I like you mentioned. We used to listen to their stories. Now Yes. I think that has to change as well. That has to come. We'll have to sit with our old people around there, our old folks who have a wealth of experience. Learn from them, and Exactly. that is how we can build a perspective. So rather than just everything in the real wali dunya, पूरा दिन reel scroll करते रहेंगे बहुत उससे. ज़्यादा. Oh my God. मतलब So क्या वो एडिक्शन है. दैट्स एन एडिक्शन. यू नो, उंगली दुख जाती है लेकिन आंखें और मन नहीं भरता. that is what the Amazing. social media. That is what it is made for. You we are the product when we are watching the reels. We are not being provided the service. We are the Yes. service. So that is Yeah. what we have to understand that as well. So ma'am, before we conclude, I think we also would like to know about, you are playing this important role in women empowerment also, and you've been heading the district Sanic Welfare Board as well. You're heading that. So also there have been a lot of issues coming up with the OROP thing and the Jawans. What are the problems? Because the officer from the military as well as other departments, they have good resettlement options. But when it comes to Jawans, they don't have the requisite skill set to get. Mostly we see them as security guards and other not so good job options. So what are the things that you challenges that you have encountered while resolving their grievances? तो उनके क्या challenges होते हैं जिनको हम थोड़ा briefly we can touch on that as well. Navjot, I was also the thought process कि ऐसा ही है कुछ. I like to bring in. I am working on many aspects to this issue. Uh, First of all, our armed forces itself is working on many aspects. So first thing is we have made a parlance of the equivalence of the education that we give to our people uh, during their services in the armed forces, which is in parallel. It is in parallels to the civil streets. इसकी आपको AWPO की आप साइट पे जाओगे, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑफिस की साइट पे जब जाओगे आप, तो आपको उसमें पार्लेंस का पूरा इक्विवेलेंस दिखेगा. एंड आपको कोई से आई एम इन टॉक्स विद मेनी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, आई एम इन टॉक्स विद देम दैट आपको मेरे बंदों को इस पार्लेंस में जॉब देनी पड़ेगी और इस पार्लेंस में इसको आपको वो पेमेंट देनी पड़ेगी. There are people who are getting into security jobs because अभी भी कई कई जगहों पर ये आंखें अभी खुली नहीं है. There are people like me, like-minded people like me who are working on it and who then fight for it कि नहीं, अगर ये बंदा मेरा इंस्ट्रूमेंट सीखा हुआ है, you have to understand one thing for sure कि मेरी 70% of the chunk of the armed forces is पैदल या artillery, right, या armored.
तो उनमें से भी लोग यही सोचते हैं कि इनको मैं सिक्योरिटी की जॉब दे दूं, बल्कि नहीं, दे आर वेरी गुड इन देयर टैंक्स, दे आर वेरी गुड इन देयर एविएशन हेक्टर्स को ठीक करने के। तो वो चीज आप और मेरे जैसे ऑफिसर ही बाहर लाएंगे कि देखो, एक बंदे को जब जॉब नहीं मिल रही है तो वो मर खप के वो बेचारा सिक्योरिटी नहीं जाता है। You and I, who are outside and who are at the such positions, can fight for it. Okay, listen, folks, here are the parlance. You want people? Here are the people who are here, are the people whom I am giving. Now interview them. You interview them, you like them, perfectly take them. If you don't like them, perfectly alright. But you cannot just deny them like this, because then we are working. I've already started working on many paraphernalias that you will upskill them. आपको Right. एक चीज, आपको नॉलेज मिल जाएगी, आपको स्किल मिल जाएगा सोसाइटी में, लेकिन कुछ इंटेग्रल चीजें हैं जो आपको कभी नहीं मिल पाएंगी। डिसिप्लिन नहीं मिल पाएगा, आपको ऑनेस्टी नहीं मिल पाएगी, आपको वो ईमानदार Absolutely. बनना नहीं पाएगा। वो आपको बनी बनाई मैं दे के दे रही हूँ ना मेरे बंदों में, Defense में ले yes, लो you उसको। get it. You get हाँ, it. आपको एक्सटर्नल चीजें नहीं मिल रही ना, वो आप डाल दो। इंटरनल चीजें तो मिल रही है ना आपको। I think आपको that मैं facilitation has to happen. That facilitation has to happen. यस, The खरा सोना the दिहा, या खालिद सोना आपको दे रही हूँ मैं। आपको सिर्फ उसपे एक परत चढ़ानी है, शेप देना है, वो आप दो। true, true. और उसको इंटर्नशिप कराइए आप 6 महीने की, क्योंकि कम से कम 6 महीने उसको बंदे को टॉक्सिक को लगेगा। आपको नहीं बंदा ठीक लगता, उसको मत देना नौकरी। Sure. लेकिन आप बिना उसको परखे ऐसे मत करो। सो द few of the industries have agreed here, and it is happening at the national level also. It is just Nice. that is to now start going into the grassroots. There are many officers, definitely they are getting into it, and that's where my fight is on now. That I want my Jawans and my Jisu Saiban also, who are wanting to be participating under such manufacturing companies, to learn. They will have to learn. Let's not, be goody goody to them कि नहीं नहीं साहब, कि आपने 22-32 साल की नौकरी कर ली तो आप जैसे जाओगे आपको वैसे मिल जाएगा, नहीं। He will have to come to the level of that parlance in the civil world also. And if he is ready, I'm ready to fight. So this thing is happening, Navjot, and I like to bring it on the forum again. Vadodara itself, the VCCI has signed MOU with the government that Agniveers, like we'll talk about Agniveers also, and anybody else who's educated, they will take them in their jobs. And Right. VCCI has got a big expanse. Baroda is as such increasing in their in their expanse of industries. Boeing is coming. The C-20, the other aircrafts are coming. We have all kind of C-25 industries. low fast. Exactly. Yes, everybody is coming in, and they have But we signed are an in MOU. talks with the importing those engines from US as well, the Yes, GE414 yes, and yes. the Rafale Marines also. So I think Every, lot of and as we are going for this Atmanirbhar Bharat Abhiyan also, the government is focusing too much on defense, indigenous defense manufacturing. I think the yes. services of our jawans can definitely be used. The expertise should Exactly. be used. Yes. That's the reason there's a parlance. Well, as I speak, you can open the Google, open the site of Army Welfare or Placement Office. You can open it up, and there's a parlance. इतनी बड़ी पोथा है, compendium है वहां पर, and it is Hmm. upgraded at irregular intervals. आप उस पर को पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि जो सिविल स्ट्रीट में आपको जो रिक्वायरमेंट है, फौज में उसका पैरेलल है। हाँ, उसको अच्छी अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती होगी, लेकिन आपको बंदा काम करने वाला चाहिए कि वो या बंदा वो चाहिए कि इंग्लिश भी साथ-साथ में बोलो। वो आप 6 महीने लगा के सिखा दीजिएगा। वर्किंग नॉलेज तो सबको आती है, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एवरीवन नोस, बस उसको फाइन ट्यून करना है बस। बस, सो दैट थिंग इज़ ऑलरेडी ऑन, एंड आई हैव आल्सो टेकन इट एज़ माय पर्सनल एजेंडा कि मैं इस चीज़ पे हर जगह पे फाइट करूँ। एंड येस, सेकंड थिंग दैट आई हैव टेकन ऑन द फाइट इज़ नॉट अ सब फाइट, इट इज़ जस्ट पुटिंग माय पॉइंट अक्रॉस। You tell me the CTC that you're going to give to my men, and whether it is in parallel with the people in the civil street, only then I'll give you my men. मैं अपने बंदों एब्सोल्युटली। को कम पे में नहीं आने दूंगी। I will दैट इज not ऑल do justice to दैट them. इज ऑल दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So Ma'am, one issue that I am very passionate about, and I would like your insights into this: drug de-addiction. I mean, in Punjab and in fact my own home state, I mean, this is it is the Hydra is spreading its wings, very rapidly.
and the youth is falling prey to it. A lot of factors, for example, unemployment is there. This social media frenzy has kind of, and relationship disorders, all these things coupled with, push the youth into these things. Some out of, sounding very cool, and others out of depression and all these things. So how can we, inspire the youth to move towards fitness, move towards more meaningful things, and not take to this, path that will, be taking them down to the darkness. So what is your perspective on this? You have touched very, very a chord which is very close to my heart. I think that this is a way as to how मतलब एक लड़ाई हुआ करती थी जो कि बॉर्डर्स पे हुआ करती थी। फिर एक लड़ाई होने लगी जो कि कोई आकर के हमारे अंदर देश के अंदर गोली बारूद करता था। ये लड़ाई आप कैसे लड़ो? ये वाली लड़ाई आप कैसे लड़ो? जब आप अपने देश को ही खत्म करो, देश का फ्यूचर को ही हम खत्म कर रहे हैं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई I'll take 10 steps behind and back. I'll start before pinpointing on all the students and the kids. I'll start I'll ask for a wake up call for all parents, all teachers, all those people who are there at good places, all those people, small, big entrepreneurs, small, big teachers, small book schools. जब मैं अपना सोचने लग जाती हूँ और मुझे किसी और की नहीं पड़ी होती, तब मैं ये नहीं कह सकती कि आई एम गिविंग बैक टू द सोसाइटी. Today the time has really come for us to start giving back to the society where we all grew up. हम अपने अहम में इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, हम अपने अहम में इतने बड़े हो गए हैं, गुरूर में हो गए कि हम भूल गए हैं कि हम कहाँ से उठे थे. हम ये भूल गए कि हमने भी वो लड़ाई लड़ी है, हमने भी वो समा देखा है जहाँ हमें नहीं मालूम था कि हमारा फ्यूचर क्या आने वाला. तब हमारा किसी ने हाथ पकड़ा था, तब हमारे किसी टीचर ने हमें बोला था कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ. तब किसी ने कहा था कि ये ले 10 रुपए, ये ले 50 रुपए, ये ले तेरी मंथली फीस, मैं भरूंगा, चिंता मत कर. या तू चिंता मत कर, 6 महीने तक मैं तेरे, तू पढ़, तू मेहनत कर. We forget. Before I really call upon the youth, why this youth? Why the PUBG? Why this addiction of games? Why the addiction of the drugs? Why this is happening? Because we are not paying attention. We are focusing on the shortcuts. The shortcuts are ये ले 10 रुपए जा enjoy कर ले, ये तेरा मंथली पॉकेट मनी. मुझे ये बताइए कौन सा पॉकेट मनी? ऐसा तो क्या पॉकेट मनी है जो कि घर में नहीं मिल रहा खाना और आपको बाहर मिल रहा है? Why? Because that pocket money is a severance that you're wanting to pay because मैं आपको इतना attention नहीं दे सकता. Focus, boss, understand, children do not grow up. Only weeds grow up. Plants don't grow. Plants wither away if they are not taken care of. Weeds ही बढ़ते हैं uncaring environment में. You Very have true. to care. You have to care for these offsprings of yours, of society. You think आपकी गलती नहीं है? नहीं है गलती. ओके, आप ये बोलोगे घर में एनवायरनमेंट ऐसा हो गया जिसके कारण से हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पाए. नो, दैट इज एन एक्सक्यूज. Yeah, Your mother, my mother is a ज्ञानी graduate. My mother, she left the job because she said कि मुझे बच्चों को देखना है. I took certain decisions in my life because I wanted to give attention to my child. I've come back, left Amazon for certain reasons. I love Amazon. I left Amazon because I knew कि मुझे कुछ चीजों को फोकस करना है. Not that I'm doing a great job for my this one, but every beautiful thing requires care. Every beautiful things you want to make your society beautiful, you have to focus, you have to take care. You want to make your youth come back onto this track, folks, extra effort लगेगा. वो extra effort क्या है? जो जा चुके हैं उसको वापस लाने के लिए डेफिनेटली 10,000 स्टेप्स ज्यादा लगेंगे, लेकिन जो नहीं गए हैं उनको रोकना आप है. पहले उनको रोकना है. उनको कैसे रोकना है? बिकॉज यू हैव टू बी देयर. जब वो परेशान है, जब उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुरझाहट आ रही है, आपको बैठना है. मेरी बेटी की आंखों में, मैंने कहा आपको, जैसे आप उसकी आंखों में आंसू आए, उस समय तो मैं उसको साथ हूँ. बाद में मैं उसको बोलती, देख बेटा, यू एंड आई आर द बॉन्ड, प्योरेस्ट ऑफ द बॉन्ड. तू चिंता ना कर यार, तेरे फेलियर भी इसके साथ मैं भी हूँ, मैं तेरे साथ हर जगह पे हूँ, तू चिंता ना कर. दैट थिंग goes so deep
that child knows chinta na kar. That child will not go even if कुछ आगे पीछे होता है. Child will come back and say कि sorry मम्मा गलती होगी आगे से नहीं होगी. That strength of Give wanting them the of freedom. Give them the freedom to fail, freedom to be vulnerable also in front of yes. us. या सो आई आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं आप आपको क्या लगता है रिलेशनशिप सिर्फ आज आज की तारीख में थे आई वेंट टू कॉलेज एंड आई वाज सॉरी अगेन यू आर ओपनिंग सारी मेरी पोल खोल रहे हो एंड आई हैड अ क्रश ऑफ द बिगेस्ट क्रश ऑफ माय लाइफ स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम ओके मीन हो गया एंड आई केम होम एंड सेड ब्ला ब्ला मम्मी ये ब्ला ब्ला मम्मी उसकी आंखें ऐसी उसका स्टैंड ऐसा एंड वो पढ़ता है ऐसा एंड वो माय मम्मी मेरी मम्मी खाना बना अच्छा, 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 अच्छा. She patiently listened to me. She didn't say, खबरदार जो तूने इसकी तरफ आंखें उठा के देखी, मैं तेरे हाथ काट दूंगी, पैर काट दूंगी. She never said that. She said, अच्छा जी, थर्ड ईयर में पहुंचे मम्मा अगर वो आके मेरा मतलब he asks me to get married to him, will you say no to him or yes to him? आने तो दे. आने के मना तो नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल मना नहीं करूंगी. What a lady! And just imagine if she should have said, खबरदार जो तूने इसके ऊपर से ध्यान भी दिया तो. Why? Repulsion create. Repulsion Yes, create. repulsion starts creating. When you stop something, it is going to bubble up. It is going to propel. It is going to force. Let it flow. Let the emotions flow. And consider and again, when you have the freedom of talking to back to your parents or your friends, you literally can come and talk each and everything. I mean, we True. all have grown. ऐसा नहीं कि जिंदगी में पहली बार कोई इंसान जवान हो रहा है. Everybody has born who has born is going to grow old and is going to be a youth and is going to fall in love 10,000 times. Believe you me when I say 10,000, it is literally 10,000 times. You're going to feel bad. You're going to have fights. You're going to have crushes. You're going to have depression. What depression? Please go and talk, 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 and talk. So onus before these kids is ours. We can't shirk away from this responsibility. Sorry if you expected me to tell something to the youth. Well, I will tell them also. But उसके पहले इसका ओनस Parents, हम parents पेरेंट्स का have है, to. सोसाइटी का है, सबका है. आसान है उसको बोलना कि देख वो गिर गया. एनवायरनमेंट किसने दिया? बॉस तुमने तो दिया. यू गिव दैट. तुमने उसको पहले कभी नहीं बोला जब वो आगे बोला मेरी मेरी फ्रेंड जा रही है पिकनिक मैं भी जाऊंगी. उसको तब आपने बैठ के समझाना था. लिसन भला भला बुरा तुमने सोचना है वो कुएं में कूदेगी तुम भी कूदोगे इफ यस प्लीज गो दैट इज द फर्स्ट लेसन बॉस सो सॉरी इफ आई कुड नॉट गिव यू द राइट आंसर दैट बच्चों को क्या No, देना चाहिए that's the best answer actually. या That's सो that's the दैट इज important thing. I mean, that's the role that even the guardians have to play. यस I mean, यस it is the nurturing. It's the nurturing that the child receives that या kind of shapes his or her personality. yes And so if there is no he or good happening yeah there is no good happening in this world it is good bad ugly boring we have to accept please all of it and then embrace it and then move forward. That's how we yes build a more collective society and a peaceful and confident society, confident young people when they're able yes to own their failures, own their Hmm. misgivings, and be open about it. So And very one more rightly, thing, yeah. So one more thing I would like to bring out, Namjot, is that in this world wherein we are celebrating only the goods, why are we that's not bringing bads? yes, तो ये yes, एक फार से सोसाइटी आ गई है कि ओ माय गॉड वो बच्चा बहुत pretentious, यस pretentious. या सो मुझे मेकअप करना बहुत जरूरी है मुझे रूल्स लगाना बहुत जरूरी है और मुझे एक ना एक सेलिब्रिटी बनना बहुत जरूरी है मुझे एक इन्फ्लुएंसर बनना बहुत जरूरी है नो living a satisfied life is success. Contentment is more important. Yes, that is success. ठीक है I mean I would have interviewed you before really coming on to say कि ऐसा तो क्या खास है दुनिया में इतने अनसंग हीरोज हैं नवजोत इतने अनसंग हीरोज हैं पर उनके मन में तो कभी नहीं आया so the one who are being sung on Instagram, Facebook, WhatsApp and so on and so on are they उसकी लाइफ देखना चाहते हो वो बनना चाहते हो बॉस
That is not the real thing. That is There part is of more. certain thing. There is more to it than meets the eye, and I believe we are much beyond what we are seen to be. I mean, it's leading without a title is itself. We don't need Yes. titles. We don't need Mm. that thing to be what we are. What we are at the Yes. core. हम अंदर क्या है? What are we made of? What is the Yes. metal? What is the metal inside us? That is very Few years important. back, some I had gone to the this one uh, shop. I'm just wanting interviewing because you just reminded me of something. So I said Adidas, I wear Adidas, I wear Puma, I wear soap, I wear say, oh my god, I am becoming a chalta firta dukan of brand. I then stopped there and then I made a cliche sentence for me then and that stands with me today. I said, I am not going to wear brand. I may wear a brand, but it is Kamal the brand. I am the brand. Brand Not should that not I'm wear me. Brand should yeah. not wear me. So I am wanting to tell everybody be the brand of your own. You are Navjot a brand. I am Kamal a brand. I am a brand. Exclusive, unique, amazingly awesome. You are Navroj, unique, amazingly awesome. Whatever that is uniquely to you, you are the brand. You be the brand. Once you get carried away by that thing that mujhe wo cheez chahiye, that is the way you've lost it. So Sorry that for is that getting is that definitely true. I mean, we get too carried away by titles and all these things. So some I read somewhere, and that's a very relevant point that you made also here, that we try to compensate with external things what we lack inside. For example, yes, what we lack as a personality, as a person, in our skill set, in our overall persona, that we complement with things. I have a yes, fancy car. I have a big house. I have a big job. These are all yes, something outside of us. When we yes, when we can't go outside, it's better to go inwards, and that's the yes. only journey that we need to have. I mean, there's this poem that's very very beautiful. I like कि दो चार ख्वाब है मेरे छोटे छोटे जिंदगी चाहे गुमनाम हो पर मौत में मशहूर चाहता हूँ. So that's the Ah, thing. I mean, so there is more to it. I mean, our life. I always have been driven by this idea that this world should be a better place because we came this way. We should be that chariot of change. We should yes, bring, if we can bring some light into this world which needs so much darkness around there. If we can bring some light, so that goal is fulfilled. I think that's a life well lived. We don't need yes. to build mansions or No, sing. So that's the little part we if we can play. I think yes. that's what That's we can. that's the start. That's the start. Absolutely, absolutely, ma'am. I'm all for it. I'm all for it. And if in any way, any role I can be of any assistance to the vision that I think we have to take that step forward in taking that vision forward. Merely Yes, sloganeering is also not going to help. We have to come on the ground and in fact, ma'am, I'm confiding with you. My goal is to bring that 1 million champions of change in this country. Going forward, who will spread like wildfire and create that dynamo effect, create that positive environment, so that we create a society that is so uplifting, so beautiful, so beautiful. So that is the goal. That is the goal. I'm so happy, Navjot, where that you share the same thought and you align with the vision. I love the vision of yours, and that is what is required. You're very young, and coming from you, it is an inspiration, and it's a level of satisfaction that yes, the youth does think of that kind of a thing. Um, I would surely, when there are so many dreams, not just for me, my dream is in compassion with the embodiment of the dream that I live and I see for others. My dream is to see every widow educated, every widow, veteran widow, to be placed nicely, living a life of respect. Dignity. Yes, dignity. My vision is every veteran to be respected. My vision is every woman to not to be a victim, but to grow up to that. I also speak on many issues today.
Relationships are very good, but then there are broken relationships also. People are not able to come out of it. That is a very big source of depression. I speak for that also. I have faced that and I've come out of it. Today, I want to stand for all those women which are still in a patriarchal society. I've seen that part also because at some zones, people men do think that ye to kya hi bolegi. Today, I'm thankful to all those people in the society who have made me feel that okay, she will not speak, and today I'm able to speak and be and do that. I want to stand for those people, men, women alike. I want to stand for those people also. After undergoing all these struggles, Jyoth, I've realized I can't do anything for anybody. I can do only one thing. I can be me. I can be truthful to myself. I shall not change. I shall be the person that I am. And once I'm consistently, daily basis that, आज कोई मुझे फोर्स मेरे को रेजिस्ट करेगा, कल मेरे बारे में बुरा भला बोलेगा, परसों जब मुझे सबके साथ चलता हुआ देखेगा या देखेंगे, तो मेरे साथ हो चलेंगे। मेरा फर्ज सिर्फ इतना है कि आज मैं धैर्य धरूं और चलती जाऊं, सिर्फ चलती जाऊं, रुकूं नहीं, डरूं नहीं। वो मैं शेफ डेफिनेटली चाहूंगी, कभी 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 मैं ये जो जंग जो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, कभी मैं अकेले हो जाती हूँ। आज मुझे संग में बहुत सारे लोग मिले हैं। आई वाज टेलिंग इट यू दैट आई स्पोक टू मेनी एंड द मेनी पीपल सेड कि ये तो क्या ही है, ना इसने कोई जंग लड़ी, ना इसने कुछ बोला, इसकी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है। यार राइट, वो जो जंग दिखी नहीं वो जंग है, और जो जंग बनकर जंग लड़ कर के मैं आगे आ चुकी, और जिसने मुझे सवार दिया और जहां मैं खड़ी हूँ, क्योंकि वो ओझल है, वो तुम्हें समझ नहीं आए। सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड आई एम मच मच, मैं उसके बहुत परे हूँ। I am much away from all these things because today I care for a very larger vision. And that same larger vision that you talk about, it is that it is us who's going to make the difference. And I'm ready for that us. So, That is what is required, ma'am. I mean, people with like-minded thoughts coming together mm, and taking concrete action. That's what's gonna change. I think we have to be confident enough in speaking our truth. yes, That is building onto your idea. As a student of philosophy, I am into reading philosophy. So I would like to bring very beautiful concept, existentialism. That's the yes, philosophy of existentialism. A very popular philosopher, Soren Kierkegaard, he brought this idea of living in bad faith. So he says that our life is like a raft in the open sea. We are thrown into the circumstances of the world, its absurdity, and death walks right in the face, and all these things. And he says that at the core, we forget our own existence. For example, if I am a teacher, I identify myself as a teacher. I'm a waiter, I become a waiter. I'm an army officer, I become an army officer. I become an IS officer, or whatever. He gives the example of a waiter in that case. For example, a waiter who is waiting tables. So whenever somebody walks up to him and he's like too obedient, and yeah, he becomes a waiter. He forgets that he's at the core, he's a human being. So that yes, is forgetting your essence, because that yes, is existentialism, is like your existence is beyond your essence. So exactly. that thing has to be there. Yes, Authentic, yes. authentic existence. Authentic existence. Beautifully rightly brought out. That is why perhaps in the different world, your work is not just to sign. जहाँ चीजें खत्म हो जाती है, वहां इंसान की काबिलियत शुरू होती है। तुम एक तुम इस दायरे में जब बंध जाओगे, तब दायरा तुम्हें खत्म कर देगा। मत बंधो। बट वही है, people will learn, Jodh, but they'll have to go through to be it. This also I've learned over a period of time. फ्री का ज्ञान Ma'am, किसी को पचता नहीं। फ्री को yes, ज्ञान ma'am. किसी को फ्री का ज्ञान किसी को पचता नहीं है। या वो जिंदगी का मोल देते हैं या वो मोल देते हैं। मोल तो देना ही पड़ता है। सो We have to pay the price of our choices. यस, Either way, whatever path, what I have a very little experience as of now in life, but what I feel, whatever path we take in life, there is a price to pay. देयर इज Either way, you want to go through hardships now, as you mentioned. So that price you're paying, your personality is being shaped in a certain manner.
But if you're choosing another path, you will pay the price later of being. I see some people who say that people who are corrupt, who are into corrupt practices. I think being corrupt is the price they are paying. Being corrupt is their punishment because they have deviated from that authentic existence, their real human core values. They don't need to be punished. They are punishing themselves. They punish. So I think we can delve into it for long and long, but it has been really very intriguing and interesting conversation with you, ma'am. Learning from your variety of experiences and inspiring me to bring in some of my ideas as well. So it That is was a it was really Yes. yes, ma'am. That is the kind that is the quintessential that is you were mentioning, right? And breaking it. So these conversations, when they open up on different panels altogether, now just imagine how the fusion of the energies would happen. That that is going to be the change. But Absolutely, thank ma'am. you for opening up. Let the heavens conspire, and may the world, what we do in life echoes in eternity. So whatever Yes. we are doing, whatever little effort we're taking in doing good things, may it have spread like wildfire, and you know bring in some change in someone's life, someone's perspective, and learning from your experiences, your reaction to that flood situation in Srinagar, particularly, and your childhood memories, your learning from your grandfather, as well as your military leadership, your role that you're playing in shaping young minds. All this is a lesson for all of us. And Thank it you. was indeed, ma'am, I would say it was a pleasure having you on this podcast, on this show, and learning from you, your pearls of wisdom that we had. I am personally enriched after having this conversation. I'm extremely grateful to you for having me on this show. Thank you so much, Navjot sir, that you had me on the show. And that's so very kind and modest of you. You yourself are very decorated yourself. You have plethora of experiences to your up your sleeves. That you ask the right questions required the wisdom from you to ask those questions and grill them out of me. That you had the patience to keep listening and were on the watch as to what to bring out from every question and the answers. That brings me makes that has not gone unnoticed how intelligent and wise you are. So Ma'am, I that's have really kind just of a you. recipient of what you asked me questions, and I'm surely humbled. My blessings to you for you to grow, and my blessings to you for you to grow much more beyond the horizon and bring the changes that you wish to bring. Blessings to Thank you. you so much, ma'am. I need your blessings, and may Almighty guide us all through. Please, if you come over to Jammu next time, please pay us a visit. We'd love to host you. It would Sure, be an sure. honor. It would be an honor. Yes. So I will And surely come down. Now I know I've got one more place to be there in Jammu. yeah, I'm ma'am, surely going to definitely. be And we forgot to bring out one thing that you have had a good tenure in Aknoor, my hometown. As you mentioned, Aknoor में there. आपने काफी serve किया है, so that Oh is yes, definitely. Palamala, yes, Sundarbani, Chauriya, everywhere. Yes, Yeah, that that's I entirely cannot. my domain. Now we have another bridge. Do you know there is another bridge has come Yes, up? The another bridges second come bridge, up. second bridge has come up. So Yes, yeah, I it was will. really lovely to have you, ma'am. Pay my salutations to sir as well, I'll do and that. thank you here. I Thank would you have so loved to much. continue this for long, but because you might also have to go. So anyway, it was really enriching experience, an enriching conversation, and I would love to have another conversation of that sort on Sure, maybe why a not? yeah. On We will different try tangent, to different tangent yeah altogether. yeah. We will try to build on the ideas that we discussed and Mhm. create some more awareness on a variety of issues that you're also passionate about, so we can work on I'm that with later you. as well. I'm Definitely, totally ma'am. with you. I'm totally with you. Anytime, Definitely. consider me on panel for that. Anything for goodness of the society, I'm there with you. Absolutely, ma'am. Thank you so much, ma'am. Wishing you all the best in all your Thank endeavors, you. and may you keep your blessings. I'll Thank do. you. God Thank bless you. and Jai Hind. Bye. Thank you, Jan. Thank you. Bye.